Okay, very good morning, everyone. So, how many of y'all have gone through the PNR? I think everyone has gone through the PNR sums. Anyone who has not gone through the PNR sums, please let me know. किसी को अगर PNR नहीं आता है, please मुझे बता दो. If y'all don't know PNR, I think everybody has studied No, something sir. to do with PNR. क्या नुकुल? आप Sir, I आपको think I कितना टाइम हो गया? yes, so वो शायद रिवाइज नहीं किया इसलिए पता नहीं मुझे. पता नहीं क्या है, थोड़ा ट्राई करो, ढूंढो, कुछ तो आइडिया आएगा आपको. ओके सर. Okay, Nandini, Gulshan, Chaitanya, and Mitika, are you there? Yes, sir. Good morning, sir. Very good morning. कैसे चल रहा है सब कुछ, मितिका? तुम्हारी अच्छा एग्जाम? चल रहा है सर. सब पढ़ लिया है, बस रिवाइज करना बाकी है, तो अभी वो करूंगी. बात अच्छी है आपकी, लेकिन मिस्टेक्स हो रही थी कल. वैसे काफी मिस्टेक्स हो रही हैं क्या एग्जाम्स आपके न्यूमेरिकल्स में? नहीं सर, बाकी नहीं, सिर्फ पेलोड में हो रही है. तो पेलोड के लिए अभी कल का दिन रखा है पूरा पेलोड रिवाइज करने के लिए. तो आज मेरा जनरल लैब पूरा खत्म हो जाएगा रिवाइज करके, फिर कल का दिन पेलोड है, फिर ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट और रेडियो ऐसे है, तो परफेक्ट हो जाएगा सर. गुड. बाकी एग्जाम कोई नहीं है यहाँ पे, मनन एंड हुसैन नहीं है, ठीक है, चलेगा. नंदिनी, आई होप यू आर देयर. वेल, चितन्य, आई होप यू आर देयर. चितन्य, तुमने भी यू हैव सीन द Sir, I'm लेक्चर्स, there. राइट? Yes, I Yeah, have yeah. seen. So this topic is very easy actually, but it is very confusing for sometimes when we are confused about how to put the values in the formula. So we're gonna sort that out. Just see whoever has done PNR, just quickly go through it and tell me what are the formulas for CP. चलो फटाफट एक रिवीजन करेंगे क्विकली कि आपको पता हो फॉर्मूलाज क्या है. टुडे आई एम गोना गिव यू अ शॉर्टकट, not a shortcut but a simplistic equation of this. फटाफट समझाऊंगा, फटाफट फॉर्मूला दूंगा एंड देखते हैं फटाफट खत्म हो गया तो अच्छा है. देन यू कैन गो अहेड एंड डू योर थिंग. सो प्लीज शेयर, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल पॉइंट. So there are two different things. We're going to separate the two things. One is critical point and one is point of safe return. So PNR as a point of no return is actually a little older concept. We have replaced the term and we call it point of safe return. On the other hand, we have another term called as point of equal time. And then we have critical point. So what is what? We need to have a quick branch out in understanding that, okay, this is this, this is this. These are the formulas. And then we'll deal with how to apply for the reduced task. There are simple rules of thumb that we need to follow. One important understanding that we need to have is the impact of headwind and tailwind on our airspeed. Whenever I tell you there is a plus wind component, it means it's a tailwind. And when I say there is a minus wind component, it will mean there is a headwind. If you're flying this direction, if wind is coming from this direction, this is called headwind. It will be numbered in minus, maybe minus 5 knots, 10 knots, 20 knots. It means if your TAS is 200, the airspeed in the, let's say ground speed is 200. Ground speed, the speed measured on ground. And if you experience minus 20 knots, it means it's headwind. So your TAS, your ground speed would change to TAS, and the TAS would be, instead of 100 or 200, whatever the speed is, it will reduce by 20 knots because it's minus. This is the first thing we need to remember. The whole equation will not come out as a correct answer, will not give us a correct answer if we don't apply these corrections. Sometimes these corrections will be confusing because in the formula, we have to put this speed and this speed, both. Now, what is this speed is very tricky. So you have to pay utmost attention that outbound, let's say this is point A, this is point B. So what is CP, that is critical point, and what is point of safe return? Critical point is to do with emergencies, engine failures or medical emergencies, where you need to quickly decide where to go. Should we go back to the departure? This is point A.
should I go to destination? With respect to this, where can I go faster is the purpose of CP. CP is also known as now point of equal time. So what is the CP? The CP will be a distance along your route. So let's say your route completely is of 1000 nautical miles. And during flight planning phases, you make sure that your CP is at 500 nautical miles en route. So what happens? Let's say you are flying the plane and you have reached 400 nautical miles. You get an engine failure. So it becomes a time critical emergency because if one engine has failed, the second engine could also fail. So you need to quickly decide, should I go back to departure? Should I go to the destination? I'm not considering any alternate here in this case. So if I know the CP is 500, it means up to 500, I can come back. Outside of the 500 nautical miles, I cannot come back. Where am I? I'm at 400 right now. So at 400, I'll say I can go back because it will be closer to me. So if the pilot has calculated the distance before flying, then during flight, he or she can make a quick decision. So these calculations you will not do in flight. These calculations you will do during flight planning phases. So what do you need? You need your ground speed. Your ground speed will be calculated as per the fuel consumption, your distance and time required. Then you compare the ground speed with the effect of wind, maybe wind forecast, maybe actual wind, and what you get is TAS. So in your sums, we will say we are taking TAS now, not ground speed, if there is any wind component. If there is no wind component, then TAS and ground speed will be the same. Now, second thing is, what are the different elements in the formula? Formula is easy. So here there is one thing that we need to carefully understand, that the speed will be homebound. It means the speed that I want to come back at. And then there will be speed outbound. This outbound generally is not outbound. It's called as onwards to the destination from the CP. So this is that one point that I think is confusing students a lot, many a times. Half of the times when we are not careful, still the formula gives us correct answer. But today you're going to sort out this confusion also. Formulas are simple. If you keep your eyes open, your single engine failure CP or whatever single engine failure calls will be very easy to understand, because where is that engine failure happening? From there, where will you take your reduced TAS? Reduced TAS means if one engine is failing, your airspeed will be reduced because you will not get that much of thrust. You will get complete airspeed when all engines are working. So if you're not getting complete airspeed, it means one engine is not working. So from where and where to take the speeds, if you understand that, it's only a matter of time to put it in the formula, calculate, get the answer. Simple. In both the formulas, now first is time critical, where we get critical point. The second emergency could be fuel critical. There are many such routes where we don't have alternates. There are many such routes where between departure and destination, we don't have any other airport. In those cases, we need to calculate point of safe return or point of no return. In India, when you will be doing domestic flights, you might not have to calculate point of safe return because you will have alternates, destination alternate. But places where you don't have alternate, you need to know where it is safe to continue to the destination or come back, because you will have limited fuel. So that becomes fuel critical. So point of safe return is fuel critical, where you will see in the formula there comes a term called as endurance. Endurance generally means the total amount of time you can survive in air or fly in air on available amount of fuel. But instead of endurance, we don't take endurance, we take safe endurance. What is safe endurance? Safe endurance means considering only the flight fuel based flight time, not the reserve fuels. That is safe endurance. Most of the time, safe endurance will be given to you in the question itself. You have to just use it in the formula. In both cases, do it for CP, do it for PNR. In one, you will be required to find out the time. How to require the time? How to find out the time? Find out the distance to CP. What is the distance along the route? And then use the time, speed, distance formula. Very simple. So we don't need to use any other formula for time or distance in both spaces. So I've explained this to you. Now we'll see how the numericals go ahead. In the meantime, just refresh your
learning and tell me if you know the formulas about CP and PNR. Quickly. You can send me a picture also if you see the formula in your notes. Let's see what you have because this is a revision class. You just want to know the radiostats. But I want to see if you have the correct formulas. So Nandini, Gulshan, Chaitanya, Hussain, and Mitika, please share the formulas if you have and talk to me if you have anything to talk about on this by the time I show you the formulas, and let's get solving. I'll share the whiteboard also. मितिका मिल रहा है आपको? सर व्हाट्सएप करूं? या व्हाट्सएप करो एंड आप मुझे वर्बली बताओ फॉर्मूलाज, आप एंड हुसैन दोनों. अच्छा बता दो। व्हाट्सएप भी करो एंड वर्बली बताओ. टेक ए टाइम, नो रश स्टूडेंट्स. हो जाएगा फटाफट ये. DCP is distance into ground speed homebound upon ground speed outbound plus ground speed homebound, and TCP is total distance into CP upon ground speed outbound. Okay. What is CP, Hussain? What is your understanding of CP? So it's a critical point. So it's based on time, where beyond that point we cannot go back to our home destination, and we have to move forward. No, Because this we is don't- not the definition. This is not the definition. That is the definition of point of safe return. What is the definition for CP? Nandini, Gulshan, Chaitanya, think about it. Mitika, बताओ. CP का क्या definition है? Sir, it is the decision point between two airfields from which it will take same time to fly to either airfield. ओके, मितिका से पूछा था वैसे मैंने, आप लोग को पढ़ने बोला था. मितिका आप बताओ. It is the decision point between two airfields from which it will take the same time to fly to either airfield. Correct. Gulshan and Mitika both are right about it. Hussain, what's the meaning of CP? critical point. It's is a distance from both the airfield which is equal. It will take equal time to fly. Formulas. Okay. So I'm sharing the screen with you. There are three names to given to CP. Make sure you know all these now. पहले जितना पढ़ा है उसके ऊपर ये बस add करना है आपको. What you studied before, you just to add it on over and above that. You know, my hair has become like that angry bird hair. And my mood these days is also like an angry bird, you know. I'm so sorry if I get angry at all students. Understand, sir थोड़ा बीमार है तो ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग कभी कभी. So see, okay, wait, let me share. Where is it? The thing is that I'm going to explain you in such a short and simple time that you might not understand it. So I don't want to do that. So what are the three things? It's either called a critical point or a point of equal time or equal time point. What is this point? It is a track position. It's a position on a track between any two airfields from where it takes same time for the aircraft to fly to either airport. Now, students, just imagine
Let's say I have point A and point B. Okay. I want to fly like this. And I said there is still air. That is no wind component in flight. Okay. In still air, the CP, let's say my total distance is 1000 nautical miles. In still air, no wind, the CP will always be midway, 500 nautical miles. I got my CP. Okay. In still air, rule number 1 or 2 marks guaranteed if you remember this point. There are a couple of more points. If you have headwind, what happens to CP? If you have tailwind, what happens to CP? These 2 points make it easy for the pilot to analyze where is the CP. A pilot would know if there is a headwind or a tailwind. The pilot would know the still air range or the still air CP. Obvious, right? If I have 900 nautical miles, 450 nautical miles is the CP. If you remember the 2 rules of thumb, which I'm going to give you after this, like after this point. So the first one is this rule of thumb, which I'll give you in writing also. In still air, CP is midpoint of the 2. Okay. Then in certain type of numericals, you can just look at the question, look at the options, look at the total distance you've given to you, and you can come up with the direct answer also. You don't need to do calculations also. Very simple. So first we'll do that and then we'll do the calculation. Okay. मितिका आपको डिस्कनेक्शन हो रहा है, आर यू देयर? मनन आप लेट आए हो, अश्विनी आप लेट आए हो. आई होप यू आर देयर बिकॉज आप लोग की एग्जाम से प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस. जो आपने मिस किया है शुरू का अभी 20 मिनट, प्लीज कवर इट अप, नहीं तो शायद समझ नहीं आएगा. सो पहले तो ये 3 ये लिख दो रूल्स ऑफ थंब. थंब रूल्स फटाफट. Thumb rules for CP. Remember, CP is also called point of equal time or equal time point. Okay, first you'll write PET is a time problem. CP is a time problem. Engine failure or medical emergency. These are the 2 main emergencies that could happen. Okay. Now you already know the definition. This definition can be added in your rule of thumb. Okay. It is a point from where it will take equal time to reach to either of the airfields. It's a track position between 2 airfields from where it will take equal time to reach both. Remember this definition, Hussain, don't confuse with the definition. Then write down the actual rules of thumb that I want you to write. In still air, that is no wind, point of equal time is halfway. Halfway between the entire destination. Very simple. Second one, if there is a wind, if there is wind, the PET moves into the wind. Students, this into the wind is very simple to understand. I'm going to show you what it means. Into the wind. Now look at this path that we have. Let's say I'm going to fly like this, definitely. I'm going to fly like this. Let's say the wind component is this. I'm getting a wind component like this from this direction, opposite direction. I'll make 2 arrows for the wind. So what will happen to the CP? Without wind, my CP was midway, 500 nautical mile distance, track position of 500 nautical mile from A or B. If the wind is coming from headwind, so my CP is moving into the wind. So if CP is coming from here, let's say this my symmetry is the midpoint. So if I'm going like this, if wind is coming like this, so the CP will move into the wind. It will go ahead of the 500 nautical mile point. Into the wind means into the direction of wind or opposite to the wind. In the wind. This is one logic. So if they tell you your headwind component, if your still air CP was 500,
then what is your new CP if you have a headwind component? Option could be 400, 500, 600. So you cannot calculate it. What will be the answer here? Hussein, Ashwini, Mithika, and Manan. You have to give the answer based upon this. Into the wind. 400. अभी यहाँ ही तुम गलत हो रहे हो हुसैन, मुझे तो सुन ही नहीं रहे हो आप. बाकी लोग बताओ आंसर. 6. अरे मैं बोल तो रहा हूँ ना, इनटू द विंड क्या होता है? इन द विंड ना, इनटू द विंड. सो विंड कहाँ है? विंड आगे जा रहे हैं ना हम लोग. तो हुसैन आप उल्टा ही क्यों समझ रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी. फोकस. इनटू द विंड मीन्स जहां से विंड आ रही है उसके अंदर जा रहे हैं. सो इट विल जंप द इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑफ स्टिल एयर. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? मितिका आपको समझ आया ये? हाँ सर. PET moves into the wind. Are you getting it students? Into the wind. जहां से विंड आ रही है उसमें जा रहे हैं हम लोग. हुसैन नहीं समझ आ रहा है ना आपको? Yes. Write down. The stronger the wind, the greater the movement into the wind. More the wind component, more the CP goes ahead of the midpoint in still air conditions. So here I can write, if you are confused, if there is wind, PET moves into the wind, you will say that is moves towards the B point, that is overshoots still air CP. Okay, makes sense now. I've explained it in two other phrases also, what it means, move into the wind. Okay, the stronger the wind, the next thumb rule, write down, the stronger the wind, the greater is the movement, that is shift of CP into the wind. Students, यहाँ पे logic है ना, the logic behind this is easily explained while deriving the formula. Anybody who doesn't understand the logic, it means you have not learned the derivation of formula. Now is not the time to do that. Remember this. Your logic, keep it aside right now. First, understand the formula, then develop a logic, and then you will easily understand the logic behind it. Otherwise, please don't play with your mind. Just understand these rules of thumb. So what it really means is, what this really means, okay? If the pilot has a headwind component for outbound flight, outbound would mean going towards the destination, nothing else, okay? The point of equal time has to be more than halfway between departure and destination. So I'm saying the same thing again and again. These are the rules. Just understand these rules, write down the formula, and learn the engine failure formula. Done. Are we getting it? Take a couple of minutes to go through this while I give you the formula. Please discuss your doubts quickly if you have any.
Now understand the distances will be different if there is a headwind or a tailwind component. Distances between PET and distances out of PET. So when we talk about PET, there is a very important thing that you need to understand, which I'm showing you once again. Especially exam students, एक बार देख लो, आप कभी confuse नहीं होगे बाद में. I want everybody to do the same actually. A to B, let's say that I'm flying from A to B. Let's say the total distance between A to B is D. Okay. Then we'll give the same diagram, different values to put in the formula. Total distance. Okay. Let's say I have determined my CP or PET. Let's say this is my point of equal time. Okay. So the distance taken to reach my PET, I will symbolize as a X over here. And the distance left, what do you see is D minus X, because D is the total distance. X is the A to PET. So PET to B becomes D minus X, total distance minus the distance taken to reach from A to PET. So this distance here becomes D minus X. In simple terms, anything could be asked to you based upon these. They could simply ask you, find out the distance remaining to reach the destination, provided you have reached or crossed. Now, what do I see in this case? Do I have headwind or tailwind? Who can tell me? Nandini, Chaitanya, Nukul, Gulshan? It doesn't look like it's at midpoint, right? Sir, it's a Sir. tailwind. Sir, it's headwind. चैतन्य क्या पढ़ा रहा हूँ क्या बोल रहे हो ए से बी जा रहे हैं हम लोग Okay. गुलशन एंड नंदिनी क्या था तुम्हारा आंसर हेडविंड सर. हेडविंड व्हाई Head. बिकॉज द डिस्टेंस इज मोर देन हाफ वे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना चैतन्य बी केयरफुल आई डोंट नो व्हाट लॉजिक यू आर यूजिंग बट यूज द लॉजिक दैट आई एम शोइंग राइट नाउ नया लॉजिक बना रहे हैं ना हम लोग मितिका डू यू अंडरस्टैंड व्हाई हेडविंड मनन हुसैन अश्विनी Yes, sir. ठीक है चलो मितिका यू नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट No, sir, I am confident. ऐसा मत सोचो सर ये सब हो गया वेस्ट ऑफ टाइम है अगर बेसिक्स पूरा है तो ही वो समझ आएगा वो डायरेक्ट करें फिर पता चला बेसिक्स वीक है तो पूरा वेस्ट होएगा टाइम फिर वापस आना पड़ेगा इससे अच्छा हम पूरा रिवीजन कर लें हाँ sir. या प्लीज बी इन द क्लास नाउ स्टूडेंट्स बाकी का कुछ मत सोचो प्लीज बी हियर आई एम जस्ट वेरीफाइंग आई एम नॉट जजिंग एनीवन ओके टेक अ लुक एट इट 1 or 2 minutes. Any doubts? हुसैन नहीं समझ आ रहा है ना अभी भी No, sir, I got it. ना से बोलोगे तो नहीं समझ आ रहा है मतलब Now students, in your formula, the speeds that we use, हुसैन अश्विनी मनन मितिका आप लोग तो ध्यान से देखो आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा बाकी लोग तो लेक्चर रिप्ले करके 10 बार रिवीजन भी कर पाएंगे आपके पास वो टाइम नहीं होगा समझ रहे हो so yeah the speeds that we are going to use in the formula okay पहले जो भी सिखाया है अभी वो भी याद रखो वो भी करेक्ट है बट आज का जो है वो पूरा याद रखना है आपको शायद कुछ वेरिएशंस मिलेंगे आपको so from PET if I want to go back okay PET is the point from where I decide point of equal time so either I'll go back or I'll go to the destination. So when I go back to the departure aerodrome, I call that speed homebound, H, from PET. So this becomes my homebound speed, and I've given you the direction also. Speed, that is TAS homebound. When I say homebound, it means going back to the departure point, H. Okay. And if I decide to continue to go to my destination, then it becomes a speed onward to the destination. We don't call it outbound here.
that speed is onward. This is why we see a lot of confusions happen, because earlier we were thinking outbound speed is from A to B only. So we were assuming the headwind tailwind component to be that. That is error, students. And Indian textbooks, that's why I say don't refer navigation, because there's a lot of printing error over there. Follow this now. So what is the homebound speed? We know. What is the outbound speed that I'll experience? Will be this. I won't call it outbound anymore. It will be onward. It is a speed that is TAS. I'll say my TAS is on or onward the destination. So on is the keyword over here. So now generally what happens in my equations, before PET, they will give me a different wind component. After PET, they will give me a different wind component. So my O will be also can be different. H could also be different. Or they could give me a wind component at the PET, where my O and H will be impacted by either the new wind component or the older wind component. We'll see that right now. I've got almost all elements that I need to fill in my formula. Okay. Any doubts so far? Sir, Mm-hmm. sir, I guess for a homebound it should be plus TAS. Sorry? For homebound, right? The speed Mm-hmm. should be TAS plus homebound, right? Because it'll experience No, tailwind. it's not. It's not plus or minus, students. It's just. Meaning. Okay. Sorry. No, that task plus headwind minus headwind tailwind. That is. This is not plus minus. Good to verify. I'm not giving you plus minus. I'm not giving you the headwind, because headwind tailwind we are assuming that we are masters now. Easy. Headwind will reduce my task, reduce my ground speed, as in reduce my task compared to my ground speed. So ground speed is the speed we calculate on ground without the impact of any of the winds. So that is the nil wind or still air. Headwind will reduce this speed. So my headwind will increase this speed. So with that respect, you are right. So that is very common sense. We'll see that once more. But this is not plus minus, okay? This is just description of the elements. Students, verify everything. See, don't get anything wrong. And if I'm too fast, tell me, I'll go slower. Any doubts? नुकुल चैतन्य आके भी आप गलत आंसर दे रहे हो, क्यों हो रहा है ऐसा? ध्यान रखो उस चीज का. Try and tell me if you're still stuck. Now, what is x over here, students? X is the distance to CP, right? The distance for CP. Where is the CP? The track position. That is x. So I need to find out the x in my calculations. I need to know the distance. That makes it easy for the pilot. Chaitanya, coffee do kya? नो सर नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. आ रहा है सर Okay. Good. Mithika, following? Yes, sir. To find x, that is CP distance along track. That is, we used to write like this. DCP or DCP, whatever you call it, it's x, is the distance to CP. That is the major concern. That is what we need to find out. So we can say x or distance to CP is equal to, now we get a formula. I'm not deriving the formula, directly giving you the formula. The formula is total distance, okay, multiplied by the TAS homebound, okay, from the PET, okay, divided by the speed onward from the PET to the destination. Remember, from the PET to the destination plus the speed homebound. This is the formula. Very simple formula. Okay. The engine failure thing will be much more easier if you understand this. Now you have to memorize this formula. I'm not going to derive the formula. Derivation is not important for you right now. Okay. And
People will also ask you, find out the time to reach the CP. That is, we can say time to CP. Time to CP is very simple. Once you find distance, the formula for time is write down this formula, okay? Time is equal to distance upon ground speed. Now here I'm writing ground speed and write down one rule of thumb over here. Because it's critical point, remember, okay? Otherwise you will be confused. Because it's critical point, time home is equal to time on. Please remember this. Otherwise you will think, sir, distance same nahi hai, to time kaise same hoga? This is only due to the impact of the winds. Headwind and tailwind, whatever we'll get. So whatever time I get, I'm going to use the same formula once I find. So therefore, time to CP, I can say time to CP is equal to distance to CP upon my actual speed. The actual TAS I want, whatever was, okay? The actual ground speed, because both ground speeds are considered to be the same. Remember that, okay? You can take any speed you want. We'll see. Okay. Any doubts? Let's do one example. Now there are two more terms. When you talk about engine failure, before that you need to understand the other term, which is all engines. When we say all engines out or all engine PET, all engine CP, it means we have all engines, there's no engine failure. And when we talk about engine failure CP, that's when the failure component comes into picture. That's when we have to use the reduced TAS. Okay. Reduced TAS will be given to you. You don't have to calculate it. So write down the first example quickly. A to B total distance is 500 nautical miles. Okay. And your TAS is 300 knots. Situation number 1. Students, be quick and keep your calcies ready, okay? Situation number 1. In still air. Okay. What is the formula? Find out DCP. Formula is, quickly look at the formula. The strategy is same. Keep a formula sheet separate. You can always look at the formula and solve. So for any topic you do, keep the formula sheet ready when you are practicing. So in still air, what is the formula? DCP, that is X, is equal to D into H upon O plus H. D into H upon O plus H. What is the total distance? 500 into speed homebound. Because no wind, same speed, 300 knots. Upon onward speed, no wind will be 300 plus homebound speed, no wind will be 300. What do I get? Nicely solve it, okay? First, I'll do the numerator and denominator separately. 500 into 300 is equal to 150000 divided by 300 plus 300. I would still use calci, okay? 600. And then I'll divide the two.
150,000 divided by 600 is equal to 250 nautical miles. Just with two details, you were able to find out the still air range, students. Are we following? Nandini, Gulshan, Chaitanya, Nukul. Yes, sir. अश्वनी को तो कुछ और ही करना है भाई साहब को. I'm to not even gonna involve with him right now. Nukul, Mitika, Manan, Hussain. Yes, sir. Yes, sir. अश्विनी मैं सिखा रहा हूँ वैसे करो ना, करेक्ट आंसर आएगा. इतना ही बोल सकता हूँ मैं. तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं कर रहे हो इसलिए करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है. बाकी क्या डाउट है बता सकते हो. नाउ सिचुएशन टू यू हैव 60 knots headwind. तो स्टूडेंट्स तो अश्विनी ये 1.250 क्या है भाई साहब? गलत लिख रहे हो फिर भी सही बोल रहे हो. स्टूडेंट्स योर हेडविंड कंपोनेंट यार अश्विनी व्हाट सीरियल नंबर 1.250. अच्छा 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 तो यूनिट लिखो ना उसको. कैसे समझ में आएगा क्या आंसर दे रहे हो आप? कितने बार बोला एक ही चीज? फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो सबका और मेरा. छोटी छोटी चीजें तो फॉलो नहीं कर रहे हो. कैसे समझ में आएगा क्या है वो 1.250? लिख सकते हो ना क्वेश्चन 1250 nautical miles. Yeah. Students, if you have headwind, let's say you have 300 knots outside and you are facing a headwind of 60 knots. So this headwind is generally known as minus 60 knots. Simple. It means it will reduce your 300 by 60 is equal to 240 knots. What is this 240 knots? It is the speed onward, not homebound. Onward. Because you're facing headwind when you're going outside. So this becomes your speed onward. What about your speed homebound? Okay. So let's see. So you are coming back like this. This is your homebound speed. To your homebound speed also, you are having a wind component from this side, which is 60 knots. To your homebound speed, the headwind component becomes a tailwind component because it's pushing the aircraft now. So any tailwind component gives you a plus in your headwind. So your homebound speed would become 300 plus 60 is equal to 360 knots. This becomes your homebound speed just because of your headwind component. Now, one thing we learned is headwind component will move my CP towards the destination, away from the mid-air point. So my cross verification would be that my CP should be anywhere ahead of 250 nautical miles. तो मितिका ये कम नहीं हो सकता है ना, ये ज्यादा ही होना चाहिए ना, क्योंकि it should be into the wind because I'm getting a headwind component. तो वो लॉजिक नहीं चेंज ये होना सॉरी चाहिए. सर, मैंने वो 500 या 300 ले लिया. इसलिए मैं पहले थंब रूल बता रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, दैट यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर्स. तो आंसर देखो, मिस्टेक फटाफट फाइंड आउट करो, फिर करेक्ट आंसर दो. गलत आंसर सबमिट ही मत करो आप लोग. तो आंसर टाइप करने के बाद क्रॉस चेक करो थ्रू द थंब रूल स्टूडेंट्स, प्लीज. ओके मितिका, प्लीज फिक्स इट एंड प्लीज सबमिट करने से पहले ट्राई करो करेक्ट आंसर देने का. हेडविंड है तो इट विल गो बियॉन्ड 2500. बस मैंने मेरी दोनों विंस निकाल ली. ठीक है, अभी मैं इसको फॉर्मूला में डालता हूं. नंदिनी, आर यू फॉलोइंग? Mana, Nandini, I'm not sure. Gulshan, are you following? Following, sir. अरे गुलशन, आपकी आवाज मनन जैसी हो गई. Therefore, distance to CP is equal to
D into H upon O plus H. D तो मुझे पता ही है 500 into H क्या है मेरा? होम बाउंड इज 360. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. पहले निकाल के रख लेना, ये तो बहुत कंफ्यूजन हो सकती है. अपॉन O प्लस H. O क्या है? 240. H क्या है? 360. चलो अभी उसको सॉल्व करते हैं फटाफट. 500 into 360. 180,000 divide by 240 plus 360 is equal to 600. 180,000 divided by 600, I get 300. So my distance to CP or my X becomes 300 nautical miles. Hussein, does it stick true with our thumb rule that it moves into the wind? Yes, चैतन्य sir. तुमने भी गलत दिया था, हुसैन तुम भी गलत दे रहे हो. वेरीफाई हो रहा है तुम्हारा? Yes, sir. नुकुल तुम्हारा क्या चल रहा है? अभी थरो रिवीजन चाहिए एग्जाम्स के लिए. Yes, sir. वापस Yes, नहीं sir. भूलना है, वापस नहीं भूलना है. Yes, sir. दैट इज, मितिका क्या सिचुएशन है बताओ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सोचो ये अभी रिवीजन भी हो रहा है समझ रहे तुम्हारा. हैं सर। जनरल लैब जो बोल रहे हो ना, आज मेरा जनरल लैब हो रहा है रिवीजन पूरा. समझ लो ये रिवीजन भी हो रहा है प्लस वो डाउट सॉल्विंग भी हो रहा है. अभी कर लो. कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ. नहीं सर, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, वो जल्दी जल्दी में गलत कर देती हूँ। मत करो ना ऐसा, फिर वो 60s में अटक जाएंगे ना. मैं बोल रहा हूँ आप आराम से पास हो जाओगे, आप घाई मत करो. यू विल इजीली स्कोर 80-85. बस रश मत करो, हर एक आंसर को करेक्ट होना चाहिए, इसी पे फोकस रखो. आप टाइम का वरी मत करो. आप देखो अगर 90 मार्क्स भी, 90 क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट करोगे ना, आप आराम से 80 ले आओगे. समझ रहे हो? तो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन करेक्टनेस. गाय गाय में गलत किया तो हम लोग को क्या ही आंसर मिलेगा, क्या ही मार्क्स मिलेंगे? सोचो तुम. सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है. कल भी गाय गाय में सिली मिस्टेक हो रही थी, आज भी हो रही थी. ये एग्जाम का पैनिक है, ट्रैवल पैनिक है. मेरा हुआ नहीं हुआ वो सब भी हो सकता है. प्लस यू नो ना, वी हैव सो मच ऑफ प्रेशर. वो सब छोड़ दो, अभी करेक्टनेस चाहिए हमें. तो करेक्टनेस तब आएगा जब क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी. आई पर्सनली गो थ्रू दैट इशू स्टूडेंट्स. कभी कभी when I'm not well and I want to teach the same topic that I've taught 10 times also, I don't get clarity. And I think that I need to rest some time because मेरा काम है ना अच्छे से पढ़ाना, तो मुझे खुद को भी अच्छे से समझ आना चाहिए. बट जब स्ट्रेस होता है तो नहीं समझ आती कुछ चीजें, भले आप कितने बार भी पढ़ लो. इसलिए पायलट्स को बोलते हैं ना, आप हेल्दी हो तभी प्लेन फ्लाई करो, हेल्दी नहीं हो तो मत फ्लाई करो. ऐसा. बिकॉज हमारा काम लगता सिंपल है, बट हमारा काम पूरा दिमाग का काम है, मतलब. So I had a student, he is elder to me, and he was a student from those recession days, okay, 2006, 2008. And he got to me for RT training when I was just doing one-on-one trainings, very small, very small. So he said that I have my RT labs from Canada and I'm doing everything, refreshing all my licenses and everything, okay? Before monetization, this was. So I said, okay, let's do your RT. And he did his RT, he cleared his RT. Then he went back to Canada and he refreshed his license. Then he went for type rating and all. So when he went for type rating, I remember it was lockdown. No, demonetization had happened when he went to type rating. So this guy, he was into his 30s then. And anyone who will see will be like, यार आपने aviation join कर लिया, आपका life waste हो गया. Many students go through that. He was a very good man, very gentleman, very calm, composed, and you could never see from his face that he's stressed about the age factor or the time factor. 31 then, okay, before demonetization, remember. And he was still doing everything again. He had a part-time job as a travel guide, international travel guide with SOTC. I remember. I was like, okay, good, why not? So he cleared his RT, then he went here and there, and then he gave exams and all. And luckily, you won't believe, he got a job. He got a job in one of the new airlines, and he's flying as a captain right now, a first officer, I guess. He must have become a captain right now. And what I took away from him was, one day I was talking to him, I was saying, Ki, will you be there in the city? My students would like to meet you once to just share up close personal information and experience. He said, yeah, I'll try. And so, but he shifted to some other city, Bangalore, I guess. So he told me one thing, we were chatting. This is many, many days ago. Before lockdown, we were chatting about this, I guess. He said,
Alkesh, you know something? I'm like, what? He's like, your job is better, you know. I'm like, what better, man? Come on. So he said, when I'm in the cockpit, I realize how difficult the job is, He said, constantly you have to think about 100 things. Nobody talks about it, students, because as a pilot, nobody would want to show you that you are challenged or you are weak because it's cutthroat business, right? But reality is that every person realizes it's a very difficult job. That's why they have to bring in the discipline in them. Otherwise, they'll not be able to do that job. He tells me, I have seen my organization trainers, they make good money. For airline, the trainers in the airline, they make equal amount as much as the pilots, beginner pilots. They're like, they just sit there, they don't have to worry about, flying a plane and putting the plane down safely. But we as pilots, it's all in the mind, like 100 things at the same time. While as a teacher, even if you make a mistake, you can rectify the mistake without any accidents. And that day I was like, I understand what he's saying, and it will take him a couple of more years to get comfortable. This is the truth. This is why your studies are so difficult, because the same philosophy applies. That's why take your own sweet time to get used to it, and then you'll see everything is easy. So, this tells us that you need clarity of mind, you need good sleep. But what happens towards the end of the exam days? बच्चे लोग 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, 4 घंटे सोते हैं. तो एग्जाम में वो आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा ही नहीं करेक्ट आंसर्स देने के लिए. So don't use that strategy for aviation exams, especially such exams. Take 6 to 7 hours sleep mandatory at least, no matter what. थोड़ा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलेगा. Okay? Chalo. Let's do this. Everybody agrees with this? Third situation, quickly. Now I'm giving you a tailwind component. Let's see if you can give me the correct answer. अश्विनी आंसर्स दो हाँ बराबर. अब मैं समझ जाऊंगा तुम बराबर नहीं भी दोगे तो, बट प्लीज. ओके, तीन ही लोगों ने आंसर्स दिए यार पहले वाले, सिर्फ चैतन्य, मितिका एंड अश्विनी. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखना था आंसर. 16 odds टेलविंड. चलो बताओ क्या है आंसर. ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 200 nautical miles. In the exam, please be careful about reading the units. कभी कभी सही नंबर गलत यूनिट के साथ होगा और गलत नंबर सही यूनिट के साथ होगा. सो कन्वर्ट द यूनिट्स एंड सी विच इज द करेक्ट आंसर. चलो इसका आंसर दो जल्दी जल्दी. गुलशन करेक्ट, चैतन्य करेक्ट, मनन करेक्ट. गुड जॉब, बहुत फटाफट कर रहे हो. सॉरी, वेरी गुड. मिथिका क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है. तुमने 66,200 nautical miles. सर वो हैंग हो गया कंप्यूटर सर. 200 है. अश्विनी को बोला तो आप कर रहे हो वो मिस्टेक. 200 है सर. तो फिक्स करो, वापस करो, वापस लिखो उसको. मेरे को चाहिए ये हिस्ट्री में. क्या है ये सब? हाँ, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो स्टूडेंट्स. अश्विनी किधर है तुम्हारा आंसर? हुसैन क्या डाउट है बताओ. No doubt, sir. All good. बस अश्विनी बचा है, सबका आंसर आ गया. ऐश, डीजे ऐश किधर हो? Okay, good job. Very good. You can clap for yourselves. चलो थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन करते हैं फटाफट. लेट्स सी. टाइम का फॉर्मूला याद रखना. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, and speed you will take as the outbound speed only, students. Okay, the outbound speed would be whatever speed you get. Okay, now write down this example number 2. Calculate the distance and
time to critical point with the following information below. What is the information? You get wind component from A to point of equal time is plus 45 knots. It means the outbound speed is getting a tailwind of 45 knots. Okay. Wind component from PET to Bravo, that is your destination in this case, is minus 10 knots. So students, please be aware, O के जगह पे O का wind component से calculate करनी है speed outbound, H के जगह पे H का करना है homebound. तो रिवर्स हो जाएगा आपका. ध्यान रखना उसको, ठीक है? क्यों रिवर्स होगा आपको समझ आ जाएगा जब आप करोगे. यहाँ पे सेम स्पीड विंड कंपोनेंट नहीं है. बी केयरफुल हो गए. टू डिफरेंट विंड्स. इट इज पॉसिबल. Sorry. It is possible. TAS with all engines operational is 475 knots. TAS with engine failure is 380 knots. Distance A to B, that is the total distance A to B is 2050 nautical miles. Chalo. Find out the distance to CP and find out the time to CP. Okay, I'll give you the options. मुझे भी बहुत नींद आ रही है लग रहा है. Chaitanya, you have a teammate. You are the leader. I'm behind you. Students, hour and minute conversion you can find in your CX3. Very easy. You don't even have to calculate. But if you want to calculate, there is a formula. So that only one confusion that could happen is, sir, time mein hours mein lu ya time minutes mein lu? So hours, you have to take time in if you're taking knots, because knots as a speed is nautical miles per hour. Okay. So you might have to answer the time either in hours or minutes, but what you will get will be in hours. Remember that. That hours you'll have to convert into minutes. See if you can do it. If you don't know, then I'll show you. By the way, I hope my readability is good. I didn't do the readability check. Sir, task with all engine operational is 475 knots. Engine failure we don't need here only, students. The question is asking with all engines. Okay, with all engines operational, I'll put following info below. In the question, you can write with all engines operating.
गुड, आराम से करो, करेक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, टाइम। मनन, अश्विनी, हुसैन, क्या चल रहा है? नितिका तो चलो बातें कर रही है, वेरीफाई कर रही है, नंदिनी ने एक बार वेरीफाई किया, गुलशन कर रहा है, चैतन्य कर रहा है, नुकुल कर रहा है। तुम भी आंसर तो करेक्ट दे रहे हो, बट आई होप तुम लोग भी कर रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं है मुझे, बस वेरीफाइंग। नंदिनी थोड़ा गायब है, बट आई होप शी इज देयर, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। सर आंसर दिखा दीजिए। आंसर्स दिखा दिए हैं, केयरफुली चेक करो, सबमिट करने से पहले क्रॉस चेक कर लो आंसर स्टूडेंट्स। अश्विनी तुमने पूछा नहीं सर कल क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कल ये हुआ कि तुम्हें बोला जो करने को वो कर भी नहीं रहे हो और चुपचाप बैठे थे। मैं बोला यार तुम्हारे पीछे आधा घंटा हमने डाला और आप बात ही नहीं मान रहे हो, तो क्या फायदा फिर इतना पर्सनल अटेंशन देके भी? बाकी लोग का भी टाइम वेस्ट होता है ना। गुस्सा मुझे तब आया जब आपने सॉल्व ही नहीं किया, मैं बोला आपका आंसर इनकरेक्ट है, फिर भी वहीं बैठे हो आप। मैं बोला यार ये क्या कर रहा है, पता है डिस्ट्रैक्टेड होगा ये, जाने दो इसको, कर लेगा ये अपने हिसाब से, मुझे पता है। आई ट्रस्ट हिम दैट वे। पता नहीं तुमने क्या सोचा, बट जो बोल रहे हैं वो करोगे नहीं तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे यार? मतलब आ सकते हैं बट मुझे तो कंसर्न रहेगा ना। मानन, डू यू थिंक आई शुड डाई माई हेयर रेड, फुल एंग्री बर्ड फील्स? रेड जैकेट पहन लेता हूँ। सर दे दिया आंसर। ऑब्वियस चीज है, मत बोलो यार अश्विनी, जब जवाब मांगता हूं ना बस तभी जवाब दिया करो, ठीक है? दिख रहा है आंसर, नहीं देखूंगा तो मांगूंगा क्यों चैट पे? हाँ चलो फटाफट स्टूडेंट्स। अश्विनी एंड गुलशन करेक्ट आंसर, गुड जॉब, pat on your back. Ashwin is the first one to give the answer. I like his pace. Gulshan, very good, good going, consistency maintain हो रही है तुम्हारी, very good. गुलशन तो डेफिनेटली इफ यू कंटिन्यू विद दिस पेस आप तो पूरा 90 अबाव ही लेके आओगे नेविगेशन में, जिस हिसाब से आप जा रहे हो सो फार, गुड फॉर यू। बाकी लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? ये हुसैन गॉट इट राइट मैन, गुड जॉब। हुसैन बोलेगा सर आंसर तो आ गया बट लॉजिक नहीं समझा अब तक। हुसैन चल रहा है अभी भी ये दिमाग में? So my time is coming 126 minutes. हाँ तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो वहां पे आप। क्या डाला है टाइम का फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन TCP upon स्पीड। तो डिस्टेंस निकाला ना, 985 अपॉन स्पीड डाल दो, निकालो आंसर। क्या कौन सा कैलसी यूज कर रहे हो आप? आउटबाउंड स्पीड गलत लिया है तुमने, टेलविंड ऐड नहीं किया लगता आउटबाउंड स्पीड पे आपने। भाई साहब किया है कि नहीं किया है? क्या लिया है? So जीएस why would we आउटबाउंड, add tailwind? बिकॉज टेलविंड है ना बाबा, तो मेरा जो 475 है उसको तो टेलविंड लग ही रहा है ना मेरे को। Wind component PET to B is minus 10 knots. That is बट हमने headwind. क्या पढ़ा था, द टाइम होम बाउंड एंड टाइम आउटबाउंड इज द सेम ऑन, but here the time that we take is the, here the speed that we take is the actual speed from the beginning only, because we need time to CP, not time to destination. तो ये onward speed नहीं है बाबा, ये मेरा आउटबाउंड, दिस इज द प्लेस वेयर आई गेट आउटबाउंड स्पीड। आउटबाउंड मीन्स टू सीपी, टाइम टू सीपी चाहिए ना हुसैन। तो ए टू सीपी क्या स्पीड है मेरा? 475 नॉट्स पे जा रहा हूं मैं। ए टू सीपी मुझे हेडविंड मिल रहा है, टेलविंड मिल रहा है? टेलविंड मिल रहा है राइट, प्लस 45। तो क्या इंपैक्ट नहीं करेगा मेरे टास्क को सीपी तक जाने के लिए? सोचो जरा, टाइम टू सीपी चाहिए ना मुझे कि टाइम टू डेस्टिनेशन चाहिए? लॉजिक Yes, लगाओ sir. थोड़ा। अब बताओ, मैं नहीं ऐड करूंगा क्या टेलविंड वहां पे?
+45 दिया तो है मुझे, सीपी तक जाना है ना, और सीपी तक तो टेल विंड आ रहा है ना मुझे 45। +45 is the headwind, right? To A to B. प्लस इज ऑलवेज टेल विंड यार, ए टू बी नहीं है वो, ए टू पीईटी है। क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। Yeah, अब so बताओ got it. कंफ्यूजन कहाँ है। मनन, चैतन्य, गुड जॉब। हुसैन, आंसर तो करेक्ट है, बट तुम्हारा एक मिस्टेक था, फिर भी तुम लकी हो गए कि तुमने नियरेस्ट ऑप्शन को करेक्ट आंसर मार्क किया है। बट प्लीज अभी करेक्ट आंसर दो मुझे। नंदिनी, आप भी हेडविंड टेलविंड में कंफ्यूज हो रहे हो। नंदिनी प्लीज ये फिक्स कर लो आज के लिए, हमने कई बार ये सॉल्व किया है, कहीं ना कहीं एक लूप होल है आपके अंडरस्टैंडिंग में, वो फिक्स कर लो आज। रॉन्ग है आंसर। क्यों रॉन्ग है? डी भी, डिस्टेंस भी रॉन्ग है, टाइम भी रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपने स्पीड्स गलत ली है। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला दिया है ना आपको टाइम वाला, किया गया वो, दिस ग्राउंड स्पीड, दिस ग्राउंड स्पीड इज टैस फ्रॉम ए टू सीपी। उसमें हेडविंड है तो हेडविंड लगेगा, टेलविंड है तो टेलविंड लगेगा, टेलविंड है तो ऐड हो जाएगा, हेडविंड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेलविंड है, +45 मीन्स टेलविंड, प्लस मीन्स टेलविंड, प्लस मीन्स टेलविंड। नंदिनी, व्हाट्स द कंफ्यूजन? एंड मिथिका, तुम्हारा आंसर नहीं आया यार अब तक। Yes, sir, I got one. हाँ, पूरे क्लास को बता दो आंसर आप। दो लोग का बच्चा है ना हुसैन, केयरफुल। नंदिनी, व्हाट्स द इश्यू? टॉक टू मी। मिथिका, वेयर इज योर आंसर? Sir, for homebound, it will be task -45 or -10. I'm होम confused. बाउंड ना, होम बाउंड या Yeah. टैस माइनस, बिकॉज वो आपके लिए हेडविंड हो जाएगा, करेक्ट, माइनस Sir, हो I did जाएगा। that in the calculation. कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है बाबा, पूरा चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक किया है। वो एक चीज करेक्ट की तो क्या हुआ, आगे की चीजें देखो, वेरीफाई एवरीथिंग। वो करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है चेक करो। आउटबाउंड स्पीड क्या लिया है आपने वहां पे, -10, मतलब हेडविंड कंपोनेंट -10 है, तो 475 -10 हो जाएगा आपका, 465 हो जाएगा ओ। आपने ओ 465 लिया कि नहीं लिया? कि वहां पे आपने 65 प्लस माइनस किया? नंदिनी, Sir, for outbound, I did 45 plus 475. अभी वेरीफाई किया, यही एक चीज थी जो मैं चाहता था आप लोग ध्यान दो। ओ क्या है? ओ ये है ना, तो यहाँ पे मुझे ओ पे क्या मिल रहा है, -10 दे रहे हैं ना ऑनवर्ड। क्वेश्चन रीड करो यार, ऑनवर्ड स्पीड है वो, आउटबाउंड नहीं है, ऑनवर्ड। ऑनवर्ड एंड आउटबाउंड में डिफरेंस है। सी, पीईटी टू बी दिया है ना -10, सो दिस विल बी एडेड टू ओ, added subtracted to O, the wind component. नहीं समझ आ रहा है नंदिनी? No, sir. नहीं समझ आ रहा है? No, sir. सॉरी। No, sir, I didn't get that point. अरे there are two different wind components. Are you getting me? Two different wind components. One from A to B. Sorry, one from A to PET. Do you understand what is that wind component? 45 knots. Yes, sir. That's a tailwind, tail PET. So that will impact my H. Are you getting me? Yes, yes. Now I got. There is another wind component from PET to B. That will impact my O. Yeah. If there are two different winds, I'll calculate two different winds. Like in earlier example, if I have just one wind, I apply the same wind in both cases. But here we have two different winds. So O will be facing different wind, H will be facing different wind. And when I talk about time, speed, distance, that distance is the outbound speed from A to PET, which is 475 plus minus whatever headwind, tailwind I get, which is generally tailwind over here. आ रहा है समझ में नंदिनी क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Sir, H is 520 plus like H 475. 520 नहीं होगा। H कैसे होगा 520? आप H Tailwind ऐसे ना जा sir. रहे हो, अरे तो आपका डायरेक्शन तो होम बाउंड है ना, डायरेक्शन देखो ना H का क्या है,
टेल विंड तो आपको ए टू पीटी के लग रहा है ना, टेल विंड ए टू पीटी आपको टेल विंड लग रहा है. यू आर फ्लाइंग लाइक दिस एंड यू आर गेटिंग अ टेल विंड टू पीटी, सो योर टैस इज इंक्रीजिंग. होम बाउंड तो रिटर्न आने का टाइम है ना, रिटर्न. सो रिटर्न को क्या लगने वाला है, वो 45 जो टेल विंड था इस एयरक्राफ्ट को, रिटर्न एयरक्राफ्ट को वो तो हेडविंड लगने वाला है ना. मितिका Yes, टॉक टू sir. मी. सो हेडविंड हाँ लगेगा तो क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा मेरा टैस? कम. तो वो डालना है ना एच में. दिस दिस थिंग स्टूडेंट्स, बी वेरी क्लियर ऑन दिस. अंधे में मत करो, आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो फॉर्मूला. ब्लाइंडली क्यों कर रहे हो? सिंपल है. मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे को टेल हेडविंड आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे टेल विंड आ रहा है. वैल्यू तो विंड का सेम है. कंफ्यूजन क्या है वहां पे? आराम से करो ना इस चीज को. मितिका नहीं समझ में आया क्या आपको? होम बाउंड को जो मेरा आउटबाउंड का टेल विंड था, होम बाउंड के लिए वो हेडविंड बन जाता है, तो माइनस हो जाएगा. मितिका नहीं हुआ है तो अच्छे से समझाओ, मैं अच्छे से समझाऊंगा फिर से हाँ सबको. सर समझ आ गया वो. और क्या कंफ्यूजन है बताओ. कुछ नहीं सर. तो तुम स्टक क्यों हो गए? तुम्हें अगर एक एक सोल्यूशन से करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो तुम दूसरा कुछ ट्राई करो ना, और आंसर लेके आओ. रुक क्यों गए और आंसर क्यों नहीं सबमिट किया अब तक? लाइक नंदिनी गेव मी वन आंसर विच इज इनकरेक्ट, बट तुम्हें कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए था ना. चलो अभी करो सॉल्व फटाफट. स्टूडेंट्स फास्ट, ओके. सी इफ यू हैव एनी डाउट्स. अमितिका नहीं समझ आया तो बताओ अच्छे से. डोंट बी स्कैर्ड एंड डोंट बी शाय. एंड टाइम की टेंशन मत लो यार, ये कर लिया 5-6 मार्क्स 8 मार्क्स, बहुत बड़ी बात है यार. अश्विनी कोई डाउट्स है तुम्हें? नेगेटिव सर, अभी तो नहीं है. अश्विनी कॉन्फिडेंस किधर है? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? ओके. अश्विनी आर यू नॉट फीलिंग वेल? सर थोड़ा स्नीजिंग हो रहा है सर, सीजन चेंज हुआ उसका थोड़ा. ठीक है, आपसे नहीं हो रहा तो आप छुट्टी ले लो, कोई नहीं. मितिका टाइम निकाला आपने? टाइम. नंदिनी डिड यू रिमूव द टाइम? मितिका डू यू नो हाउ टू गेट द टाइम? यस सर. क्या है आंसर टाइम का आपका? So students, distance you have got 985. Time is equal to 985 upon the speed outbound to PET. Speed outbound to PET was 475 plus 45. So I'm getting 520. Why? Because tailwind लगा था ना मुझे वहां पे. So 985 divided by 520, I get 1.89 hours. Okay. 1.89 आवर्स को आप CX3 पे मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. आ रहा है किसी को ये करना? नंदिनी आर यू गेटिंग इट? नंदिनी आर यू गेटिंग इट? मिथिका आर यू गेटिंग इट? क्या आप लोग का टाइम नहीं मिला है मुझे? यस सर. या चैतन्य? सर 985 नहीं आया, 967 आया है मेरा. तो कुछ छोटा मोटा सिले मिस्टेक किया आपने. शायद आपने वो 10 नॉट्स को ऐड नहीं किया होगा आउटबाउंड में, और सब्ट्रैक्ट नहीं किया होगा. सर या 465 होगी ना आउट होम बाउंड. होम बाउंड 465 कैसे होगी भाई साहब? होम बाउंड में कौन सा विंड कंपोनेंट आ रहा है? 45 नॉट्स ना, जो हेडविंड हो रहा है होम यस सर. बाउंड के लिए. तो 475 माइनस 45 कितना होता है? 65 कैसे होगा? होम बाउंड मतलब पीईटी से ए जाना है आपको, तो वहां पे तो 45 नॉट्स ही है जो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. सर 10 उसमें लिखा है नॉट्स फ्रॉम ए टू पीईटी. ए टू पीईटी ना. ए तो टू होम बाउंड, पीईटी, देयर टू हियर वी आर गोइंग. बट होम बाउंड क्या होता है यार? पीईटी टू ए होता है ना होम बाउंड. यस सर, होम बाउंड पीईटी टू मतलब ए. जब हम रिटर्न आएंगे राइट. तो जो टेलविंड लग रहा था वो हेडविंड बन जाता है. तो 10 नॉट्स को क्यों ऐड कर रहे हो? 10 नॉट्स तो पीईटी टू ब्रावो है. आप पीईटी क्रॉस ही नहीं कर रहे हो होम बाउंड में. नहीं सर, मैंने उसमें 10 नॉट्स ही ऐड करा है. मैंने कहाँ 45 कहाँ पे ऐड आउटबाउंड. करा था?
Sir, I have taken outbound as 520 knots. कहाँ पे? टाइम वाले में, टाइम के कैलकुलेशन में या Negative, डिस्टेंस के sir. कैलकुलेशन में? Distance calculation में. डिस्टेंस के कैलकुलेशन में ओ ऑनवर्ड है यार, पीईटी टू बी ऑनवर्ड है, वो आउटबाउंड नहीं है। Okay. ऑनवर्ड क्या है आपका? 475 प्लस -10 है, ऑनवर्ड 465 होगा। ऑनवर्ड अलग है, आउटबाउंड अलग है। आउटबाउंड सिर्फ टाइम वाले में डालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। Okay, नहीं sir. समझ रहे हो? थोड़ा कंफ्यूजन है सर. क्या कंफ्यूजन है? सब कुछ तो साफ साफ बता रहा हूं। ओ क्या है? पीईटी टू ब्रावो इज ओ, दैट इज नॉट आउटबाउंड, दैट इज ऑनवर्ड फ्रॉम पीईटी टू डेस्टिनेशन, दैट शुड कम इन द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। तो वहां ही डालो उसको सिर्फ आप। क्या कंफ्यूजन है? Okay, so we have to take outbound as B to PET. सॉरी, We आउटबाउंड have outbound as B to PET. बी टू पीईटी। Yeah. बी टू पीईटी कौन आता है वापस? पीईटी क्यों आना है हम लोग को? वहां पे कोई एयरपोर्ट है क्या? No, sir. You said right now ना कि outbound will take from here to here, like we are going here. रहने दो, तुम रहने दो, फिलहाल रहने दो। सर नियरेस्ट आंसर तो आ गया, मतलब 467 नॉटिकल माइल्स है. तुम्हें जो सिखाया उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो ना तुम। जो पढ़ाया है उसको बैठ के समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो दिमाग ने खुद से पकड़ लिया उसी के ऊपर बेसिस पे आ रहे हो, तो क्या कर सकते हो फिर? Students, the O for DCP is not outbound, it's onward. Onward means CP to destination. Destination is Bravo. तुम कुछ नया क्यों क्रिएट कर रहे हो? ब्रावो टू सीपी तुम्हें जाना क्यों है? We are calculating the time and distance from PET, which is equal, come either to departure point that is A or go to the destination that is B. So from PET, if I come back to destination, that becomes homebound. Not the destination, sorry, departure from PET to A becomes homebound. पायलट अगर बोलता है कि मेरे को तो वापस मेरे घर ही जाना है, so that becomes homebound. तो वहां पे मेरा विंड कंपोनेंट क्या है? 45 नॉट्स टेल विंड मिल रहा था जाते वक्त, वो 45 नॉट्स अभी भी है, तो रिटर्न आते वक्त वो मेरे लिए हेडविंड बन जाता है, वो होम बाउंड हो गया। व्हेन फ्रॉम पीईटी आई एम कमिंग बैक टू माय डिपार्चर पॉइंट, वो घर है मेरा जहां से मैंने टेक ऑफ लिया है। अंडरस्टूड सर. और ऑनवर्ड मींस पीईटी टू डेस्टिनेशन अगर मुझे जाना है तो बस ये दो ही स्पीड्स हैं। When I'm calculating time is equal to distance upon speed, डिस्टेंस पूरा है, टाइम पूरा है। डिस्टेंस कौन सा लेना है मुझे? वहां पे डिस्टेंस टू सीपी लेना है, तो टाइम टू सीपी चाहिए। टाइम टू सीपी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम डिपार्चर पॉइंट ओनली। सो डिपार्चर पे मेरा टैस था 475 नॉट्स, वहां पे मुझे टेलविंड मिल रहा है 45, तो मेरा टैस हो जाता है 520। वहां पे मुझे आउटबाउंड लेना है बस। वो आउटबाउंड मतलब घर से बाहर निकल रहे हैं, उसको आउटबाउंड बोलते हैं ना। दैट्स इट। 3 अलग अलग स्पीड्स है यार, कंफ्यूजन कहाँ है? ये समझ क्यों नहीं रहे हो आप लोग? 3 अलग अलग चीजें चल रही है। ए टू पीईटी अलग विंड कंपोनेंट हो सकता है, पीईटी टू बी अलग विंड कंपोनेंट हो सकता है। एक और नई चीज सीख ली। अब मितिका मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, नंदनी एंड मितिका, आई एम आस्किंग दिस, ये कन्वर्जन आता है क्या? तुम्हारे आंसर में टाइम नहीं है, ये सॉल्व करो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ सर. तो कहाँ है? आंसर में नहीं आया ना मेरे को। 1 hour 5 minutes. 5 मिनट्स कहाँ से आ रहा है तुम्हारा अभी? 53 minutes. या सो 1 hour 53 minutes। ओके, 1 hour 53 मिनट्स भी आ सकता है एग्जाम में ऑप्शन में। अगर ये मिनट्स में है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे?
1 hour is equal to 60 minutes and 53 plus 53 हो गया ना 3 and 11 113 minutes. Perfect answer. चलो बताओ कंफ्यूजन कहाँ आप लोगों को? You are on mute. या स्टूडेंट्स टेल मी कंफ्यूजन कहाँ है अभी? अच्छे से बोलो कंफ्यूजन कहाँ है, अच्छे से. मेरी आवाज पे मत जाओ यार. कम ऑन, आई हैव टू बी एनिमेटेड. कम ऑन यार, क्लास चल रही है, वो तो होगा ही ना. गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मैं किसी पे. सर वो कहीं कहीं ऑनवर्ड होता है, कहीं कहीं आउटबाउंड भी होता है वो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, डीसीपी पे ऑनवर्ड होता है, टाइम पे आउटबाउंड होता है. सिंपल, लिख लो कहीं पे. इट्स नॉट वेग. बोल तो रहा हूं मैं, लिखो ना उसको. ऑनवर्ड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग डीसीपी, आउटबाउंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टीसीपी. दैट्स इट. मितिका लिखो उसको और बताओ समझ में आएगी नहीं ये पॉइंट. ये एक ही चीज तो 10 बार बोल चुका हूं मैं अभी तक. दिमाग में क्यों नहीं जा रही आप लोगों के? सब लिखा दिया है मैंने आप लोगों को. O इज इक्वल टू ऑनवर्ड, दैट इज PET टू B, एंड टाइम टू CP O है ही नहीं, बस आउटबाउंड लिख दो. इट्स नॉट ऑनवर्ड, दैट इज A टू PET. हो गया, बस इतना ही है. ये नहीं समझ आ रहा क्या आप लोगों को? सर बस एक बार कंफर्म कर दो, तो ओ वाज 465 ना? यस यस, बिकॉज -10 लग रहा था आपको वहां पे. वेरी गुड. ओ मतलब ऑनवर्ड, बाकी तो आउटबाउंड ही है. कोई दूसरा ओ है ही नहीं, ऐसा सोच लो आप. एंड आउटबाउंड इज A टू B, A टू PET. A टू B करूंगा तो टोटल डिस्टेंस 2050 अपॉन टोटल स्पीड आएगा. A टू PET करूंगा तो डिस्टेंस ऑफ PET आएगा बस, अपॉन द स्पीड टू PET. अब बताओ क्या कंफ्यूजन है मिलेगा? टेक योर टाइम. मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा. आई नो व्हेन समवन शाउट्स आप लोग को समझ में नहीं आता. नंदिनी बताओ कंफ्यूजन क्या है? नहीं सर, अभी नहीं है. अरे मेरी आवाज और टोन पे मत जाओ यार. यू नो आई एम ऑल्सो कूल राइट, थोड़ा बहुत एट टाइम्स. रिमेंबर दैट व्हेन आई एम शाउटिंग, रिमेंबर दैट. हाँ सर कूल है एकदम. मिथिका करो सॉर्ट आउट, टेक योर टाइम. जस्ट गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स. थोड़ा अकेले में अच्छा कर लोगे शायद आप लोग.
Confusion. बताओ और क्या डाउट्स है स्टूडेंट्स? टेल मी व्हाट आर द डाउट्स? नितिका, क्लैरिटी है? काम डाउन एवरीवन। हाँ सर एकदम। अच्छे से कर लो, बस बाद में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। नंदिनी, मनन, अश्विनी, एक दो आंसर करेक्ट आ गए, इसका मतलब ये नहीं हमें कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। केयरफुल रहो। चैतन्य, तुम्हें बताओ, तुम्हें भी डाउट था? Sir, homebound would be 485. चैतन्य, वो जो 10 नॉट्स है ना, वो पीईटी से डेस्टिनेशन ही लगने वाला है, ठीक है? होम बाउंड क्या है? होम बाउंड क्या है? पीईटी टू डेस्टिनेशन है कि पीईटी टू डिपार्चर है? PT to the airport, high departure. PT to तो departure. वहां पे 10 नॉट्स कैसे लगेगा जब तुम वो एयर स्पेस में जा ही नहीं रहे हो? तो हम्म Sir, speed to mention है B to PT. That I understood. That we will take outbound. भाई, It will बी be टू पीईटी, 465. बी टू पीईटी तो तुमने लिखा है, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं है। बी टू पीईटी कहाँ से लिखा है? बी टू पीईटी, Question में mention था. पीईटी टू बी लिखा है वो। B to PT लिख रखा. हाँ बस, तो एक सिली मिस्टेक कर दी ना, उसके चक्कर में इतना हो रहा है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ तो मैंने उल्टा लिख रखा है. हाँ बस, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? यही होता है। बाकी बाकी जगह पे आप पढ़ोगे ना, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सबसे कोई नहीं टाइम डालने वाला है जितना मैं डाल रहा हूँ इधर। उसका थोड़ा फायदा उठा लो प्लीज। हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए तुम पास हो जाओ और तुम ये चीजों में एक्सपर्ट हो जाओ। इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि फ्यूचर में मैं बोलूँ ना, यार आप फ्री हो, प्लीज 2-3 सेशन ले लो नेविगेशन के, तो आप ले पाओ। समझ रहे हो? इतना ही फर्क है स्टूडेंट्स, जो मैं करा रहा हूँ और जो बाकी लोग करा रहे हैं उसमें। 15 मिनट की चीज में मैं 2-2 घंटे लगा रहा हूँ आप लोग के पीछे। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि यार मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट तुम्हें भी पता है इसका बेनिफिट, ये करना जरूरी है। स्लो एंड फास्ट तो बाकी लोगों ने क्रिएट किया है। इस चक्कर में वर्कलोड कितना बढ़ जाता है, कभी सोचा है तुम लोगों ने? आप लोग से मैं बस एक चीज मांगता हूँ कि प्लीज जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना। तुम ध्यान दोगे तो ये सब आएगा ही नहीं। तुम ध्यान नहीं दोगे तो उसका क्या कर सकते हैं फिर? तो तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो? क्लास में हो तो ध्यान दो ना जो पढ़ाया जा रहा है। बस ध्यान नहीं दे रहे हैं, मिस कर जा रहे हैं चीजें। उस चक्कर में मिस प्रिंटिंग हो रही है, मिस फॉर्मूला हो रहा है, मिस वो यहाँ का वहां कर। अरे यार, अबे उसके लिए क्या किया जाए? फिर क्या होता है इससे? अरे टाइम कम है, टाइम कम है, वो एक एक्स्ट्रा पैनिक आ जाता है फिर। तो एग्जाम्स के पीछे नहीं भागने का, नॉलेज के पीछे भागो तो प्रेशर नहीं आएगा। लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट द राइट लॉजिक। Sir, sir, from A to P it is plus 45 knots. So it will be tailwind, correct? 475 knots plus 45. Then from PET to B is minus 10 knots. So it's headwind. So 475 knots minus 10. So according to that, my answer is getting wrong, sir. कॉन्सेप्ट में डीसीपी या टीसीपी? Sir, DCP. तो फॉर्मूला सही लिखो, डी इंटू एच है। तो एच क्या Yes, sir. लिया है वहां पे आपने? H, sir, 520. ये जो 520 है ना, ये आउटबाउंड स्पीड है।
ए टू पीईटी। होम बाउंड क्या होता है, मैंने डायग्राम में सब साफ साफ दिखाया है। पीईटी टू ए होम बाउंड होता है। तो पीईटी टू ए क्या होगा आपका? एच गलत लिया है ना आपने, 520 एच है ही नहीं। 520 तो ए टू पीईटी हो रहा है मेरा। 520 ए टू अप टू पीईटी हो रहा है डेफिनेटली, क्यों? अप टू पीईटी मेरे को विंड दिया है 45 नॉट्स। बट मेरा फॉर्मूला में एच क्या है? एच पीईटी टू ए है ना। तो ए टू पीईटी क्यों ले रहे हो आप फॉर्मूला में? वो तो ऑपोजिट ट्रैक हो गया ना। तुम लोग अभी ओके भी सर। समझ नहीं रहे हो। पीईटी इज द पॉइंट जहां पे मुझे इमरजेंसी मिल रही है। इमरजेंसी मिल रही है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो मैं अगर वापस घर जा रहा हूँ, मेरा टास्क तो मेरे को कांस्टेंट ही रखना था 475। बट मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो पहले जो मुझे टेलविंड लग रही थी, अब वो मुझे हेडविंड लगने वाली है। वो विंड तो चेंज नहीं होने वाली ना वहां पे। तो तुम ओके एच सर। एच क्या ले रहे हो? एच 520 क्यों ले रहे हो? एच मेरा प्राइवेट विंड नहीं है, मैंने कोई पंप नहीं बनाया जो मुझे कॉन्स्टेंटली 45 नॉट्स का पुश देने वाला है, नो मैटर व्हाट द डायरेक्शन। वो तो एक ही डायरेक्शन में आने वाला है। ये ए है, ये बी, ये पीईटी है। तो मैं पीईटी तक जा रहा हूँ। ये वो इसको आउटबाउंड बोलते हैं, आप गोइंग आउटबाउंड फ्रॉम द स्टेशन। यहाँ मुझे टेलविंड लग रही है, 520 नॉट्स आ रहा है। बट पीईटी पे मुझे इमरजेंसी आ गई है, मुझे रिटर्न जाना है। तो ये होम बाउंड होता है। तो 475 तो मेरा इंजन का स्पीड मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। बट यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे कौन सा विंड कंपोनेंट आ रहा है? अभी भी 45 नॉट्स ही आ रहा है। 45 तो नॉट्स पहले टेल विंड था, अभी क्या हो रहा है मेरे लिए वो? हेड विंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा होम बाउंड स्पीड? यस सर, यस। क्या हो जाएगा? तो होम बाउंड स्पीड 475 प्लस माइनस क्या? प्लस होगा, माइनस होगा, और क्या वैल्यू? सर, सर टेल विंड रहेगा, देन इट 520 हो जाएगा सर वो। अरे मेरे भाई, 520 तो सीपी के पास जाने के लिए टेलविंड हो रहा है ना। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ वापस। ओके सर, माइनस हो जाएगा, सॉरी। ये देखो स्टूडेंट्स, 330। ये मेरा टेलविंड है। ओके, दिस इज माय टेलविंड फॉर दिस एयरक्राफ्ट, लाइक दिस, गोइंग टू द सीपी। नाउ आई वांट टू कम बैक। क्या हो रहा है मेरे लिए? ये अभी भी क्या टेलविंड है मेरे लिए? क्या हो रहा है मेरे लिए ये अभी? दिस द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्या हो रहा है मेरे लिए? बोलो ना नुकुल। सर इट्स हेड विंड हो रहा है। तो फिर क्या करोगे? प्लस करोगे, माइनस करोगे? सो माइनस माइनस तो करेंगे। क्या आएगा मेरा होम बाउंड स्पीड? दो ना वैल्यू मेरे को जल्दी। यस, 430 सर। ठीक है, लुक्स करेक्ट, साउंड्स करेक्ट। हम्म, या बस क्या कंफ्यूजन है अब? होता है पता है, हेडविंड टेलविंड बड़ों बड़ों को नहीं समझ आता। पर मैं समझा रहा हूँ तो समझो ना। फिर फायदा क्या है? फिर टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लो ना, अगर मेरी बातें नहीं सुननी तो। हम्म, जिसको जिसको लेक्चर नहीं अटेंड करना, कोई कंपलशन नहीं है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, मैं देता हूँ अच्छे अच्छे मटेरियल पीडीएफ बना के। टाइम वेस्ट हो रहा है तो मत करो टाइम वेस्ट। एनी मोर डाउट्स? पूछ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही था ना हमारा? एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन नंबर 3। रिलैक्स एवरीवन, आई विश आई कुड सी योर फेसेस। कौन कौन पैनिक कर रहा है? हाथ ऊपर करो प्लीज, अश्विनी को छोड़ के। मैं देखा नहीं समझ आ रही चीजें। हुसैन आ किधर हो? रही है सर। यस हुसैन सर। थोड़ा थोड़ा विंडो पे कर्टन लगाओ ना, पड़े हैं कर्टन वहां पे। थोड़ा शक्ल तो दिखे तुम्हारा।
आया कुछ समझ में? Yes, sir. माना नंदिनी क्या चल रहा है? समझ आ गया सर। All good, sir. अभी है ना इंजन फेलियर कर रहे हैं, ठीक है? अभी ध्यान देना, इस एक पॉइंट पे ध्यान देना, बाकी सब कुछ सेम है स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंस नहीं है इंजन फेलियर में। एक पॉइंट का ध्यान देना आपको कि कौन सी स्पीड कब लेनी है, बस। फिर सीधा फॉर्मूला तो सेम है पूरा, और कुछ गलत मत लिखना प्लीज। अभी अगर मैं पीईटी लेता हूं ना स्टूडेंट्स, ओके, आई अज्यूम कि मेरा इंजन फेलियर यहां ही हुआ है, ओके। इंजन फेलियर होने के बाद, आफ्टर द इंजन फेलियर इज डन, मुझे या तो घर आना है या मुझे वापस डेस्टिनेशन जाना है, टाइम सेम लगने वाला है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पीईटी। बट इंजन फेलियर का आपको कैलकुलेट पहले करना है वो डीसीपी निकालने के लिए। तो ये डीसीपी क्या है मुझे नहीं पता, और टीसीपी क्या है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ये जो मेरी स्पीड होगी अप टू पीईटी, ये तो ऑल इंजन ऑपरेशनल स्पीड होगी। तो ये तो मेरी जनरली आउटबाउंड स्पीड होती है जो मैं टाइम में यूज करता हूँ, ओके। जो मेरी रिटर्न आने की स्पीड होगी होम बाउंड, दैट विल बी रिड्यूस्ड टैस बेस्ड। व्हाई? बिकॉज इंजन फेलियर हो गया है वहां पे मेरा, तो रिड्यूस टैस। और मेरा ओ जो होगा ना, वो भी मेरा रिड्यूस टैस के बेसिस पे ही होगा। सिंपल। बस ये दो चीजों का ध्यान रख के हम ट्राई करते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। समझ आया है किसी को? इंजन फेलियर विल इनिशिएट अ रिड्यूस टैस, बस यहां से मेरा रिड्यूस टैस होता है। तो चैतन्य के लिए मैं लिख देता हूं ओ इज इक्वल टू पीटी टू बी। नुकुल एंड बाकी सब के लिए मैं लिख देता हूं एच इज इक्वल टू पीटी टू ए, ओके। एंड टाइम वाले फॉर्मूला के लिए दिस इज आउटबाउंड टाइम टू सीपी, तब तक मेरा फेलियर नहीं हुआ है, तो ऑल इंजन ऑपरेशनल स्पीड लूंगा वहां पे मैं। बस इतना ही है। नोट, थंब रूल्स लिख दो। इफ engine failure occurs after PET, pilot will fly to destination with O as reduced TAS. Engine failure TAS or reduced TAS will mean the same thing, with O as reduced TAS. Okay. Next point, if engine failure occurs before PET, पायलट विल फ्लाई, पायलट की जगह आप आई भी लिख सकते हो, ठीक है। आई विल फ्लाई टू डिपार्चर विथ एच एज रिड्यूस्ड टैस। लास्ट पॉइंट,
if engine failure occurs on PET, I can fly to either destination or departure at reduced TAS as time taken to reach both places will be the same because we are on PET. So obvious hai. Because time will be the same. So it's a time critical problem. So time is very important for me. A simple question could also come to you, students. That what do you say? After PET हुआ है तो आप कहाँ जाओगे? Destination ही जाऊंगा भाई. Before PET, definitely I'll go home. On PET, I'll choose. What makes you choose that decision? Facilities, whether the destination has better facilities or departure has better facilities. डेस्टिनेशन में कोई वेदर तो खराब नहीं है, डिपार्चर पे वेदर तो खराब नहीं है, वो सब कैलकुलेट करके आप डिसाइड करोगे कहाँ जाना है. टाइम सेम लगने वाला है भले डिस्टेंस कम है बिकॉज ऑफ द विंड कंपोनेंट्स. बस स्पीड आप जनरली चेंज नहीं करते हो बिकॉज फ्यूल एक फैक्टर होता है जो लिमिटेड होता है. तो अगर आप स्पीड के साथ खेलोगे खुद से तो फ्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यूल रन शॉर्ट ऑफ फ्यूल. तो इसलिए हम बेसिक टास्क को चेंज नहीं करते. टेलविंड बढ़ा देता है हमारा स्पीड बट हमारा फ्यूल कंजम्पशन उतना ही रहता है. हेडविंड कम कर देता है बट फ्यूल कंजम्पशन उतना ही रहता है. एनी डाउट्स? देखो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो क्या? I'll give it just couple of minutes once the question is over. Try करो, नहीं तो I'll show you. नंदिनी कंफ्यूजन जो भी है क्लैरिफाई कर लो आज ही हम अच्छे से. Yes, बाद में के लिए कुछ मत रखो. अगर स्टूडेंट्स +45 में 45 पे प्लस अगर नहीं लिखा है तो आप प्लस ही अज्यूम करोगे. ठीक है. Calculate distance and time to engine failure PET.
2 मिनट होने आए हैं स्टूडेंट्स। Number you have dialed is currently busy. Please. Sir, can you show the options? आराम से करो, पूरा दिमाग लगा के करो। हिंट तो मैंने दे ही दिया आप लोगों को, डायग्राम भी बना दिया है। गुलशन, good job. I hope you have cross-verified your answer before submitting. आराम से करो स्टूडेंट्स, कोई गाय नहीं है। नंदिनी, मिथिका, अश्विनी, गुलशन, मनन। चलो गुलशन का तो हो गया। मनन, मिथिका, अश्विनी, नंदिनी, क्या कर रहे हो आप लोग? बात करो मुझसे, डांट से मत डरो यार। अभी नहीं डांटूंगा, अभी अच्छे से करेंगे। कितनी बार भी गलती करो, प्यार से बात करता हूँ, ठीक है? बट सॉर्ट आउट कर लो, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, बाद में के लिए कुछ मत रखो। बस 3-4 क्वेश्चंस रखो प्रैक्टिस के लिए, बहुत हो गया। वो भी अब भी कर लेना, मैं तो सजेस्ट करता हूँ। मुकुल, नॉट मुकुल, सॉरी, मनन, गुड जॉब। अरे मनन मुकुल यही चलता रहता है आजकल, एम से तो। नुकुल, मुकुल। मनन, कोई डाउट है मनन? ये सब टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं फाइनल, 100% आना चाहिए सब पे एग्जाम में। अश्विनी, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? सारे डाउट सॉल्व हुए नहीं हुए? चेकलिस्ट में से निकालने वाले हो नहीं निकालने वाले हो, बताओ मुझे। हाँ सर, ये अंडरलोड एंड सीवीपीएनआर हो गया। देखो बस सिली मिस्टेक्स ना हो, है ना? समझ आ गया है, 2-3 आंसर्स भी आ रहे हैं, बट बस सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। बस ये लास्ट फाइनल फाइनल प्रेपरेशन होता है हमारा कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है बस। उस वो हो जाए मतलब फिर सोच लो कि हम 100% रेडी हैं फॉर वॉट एवर टॉपिक। फिर टॉपिक वाइज टॉपिक आप रेडी हो जाते हो तो ओवरऑल आप नेविगेशन के लिए रेडी हो जाते हो। जनरली मैं सोचता हूँ 100% टॉपिक्स नहीं कर पाओगे जनरली, तो भी 80 to 85% टॉपिक्स भी कर लिया ना, अच्छे से पास हो सकते हो आप। ऐसा है, टुवर्ड्स द एंड बोल रहा हूँ, टाइम है तो आप 100% कर सकते हो, तो बाकी जो है वो तो आराम से कर लेंगे। बट आप लोग को अगर नहीं भी हो रहा 100%, कोई बात नहीं, 80-85% भी थरली कर लो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, आपका कुछ गलती नहीं होगा ना फिर। ऐसा है, तो 5-10 मार्क का भी मैं बफर रखूँ तो आराम से आप 75-78 ले आओगे। ऐसा होता है। डोंट एम फॉर 70 स्टूडेंट्स, एम फॉर 85 ओनली इन योर माइंड। मितिका, मेरे को पूरा आंसर दो यार, आधा नहीं, मेरे को टाइम भी चाहिए। मेरे को लग रहा है तुम टाइम में कंफ्यूजन ले रही हो, वहां पे है ना 5-6 मार्क्स तो टाइम से रिलेटेड ही होंगे एग्जाम में।
तो फिर क्या करेंगे? आपको एक डिस्टेंस आ गया, आप बोल रहे हो करेक्ट। एग्जाम में है ना वो लोग बहुत स्मार्ट होंगे, एग्जाम में ए बी सी तीनों को सेम ही ऑप्शन देंगे जो करेक्ट है, बस टाइम को वैरी करेंगे। तो हम हाफ सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, हमें फुल सोल्यूशन करने हैं। चैतन्य, तुम्हारा रॉन्ग है और तुम सेम मिस्टेक कंटिन्यू कर रहे हो। नो सर, डिस्टेंस तो सीपी से है 950। मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारा गलत है, तुम मुझे बोलोगे वो सही है, तो चल जाएगा क्या एग्जाम में भी? नहीं चलेगा ना एग्जाम में। फिगर आउट योर मिस्टेक। वही मिस्टेक कर रहे हो वापस आप। होम बाउंड चेक करो क्या लिया। 380 माइनस 45 होना चाहिए। एच ऑनवर्ड 380 माइनस 10। क्या लिया तुमने ऑनवर्ड? सर 465। क्यों? रिड्यूस So था ना, because इंजन फेल हुआ है ना मेरा। because you said that engine failure अरे is बट at इंजन CP. फेल हुआ है ना तो 380 है ना इंजन फेल का स्पीड, तो 380 है ना, 475 कैसे हो गया? क्योंकि सर इंजन फेल तो हमारा सीपी पे आके हुआ है ना, क्योंकि तब तो हम तो ऑनवर्ड तो सीपी टू डेस्टिनेशन ही है ना मेरा। Okay. तो क्या लिया है तुमने? सर 465 ले लिया मैंने। क्यों? ऑल वापस इंजन। वही कंफ्यूजन, ओ और आउटबाउंड वाली। ओ क्या है? सीपी टू डेस्टिनेशन है ना, तो क्या होना चाहिए? सीपी पे क्या स्पीड है आपकी इंजन फेलियर होने के बाद? 380 है। तो 380 से करो ना, प्लस माइनस 10 जो भी है। 475 से क्यों कर रहे हो? बताओ, प्रूव करो। ओके सर। नहीं, बोलो 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 सर, इंजन फेलियर तो सीपी पे होगा ना, तो वो भी तो सीपी से ही हो रहा है ना, कहां से हो रहा है वो? बोलो, प्रूव करो अभी। नहीं, प्रूव करो ना, दिमाग में क्या चल रहा है जल्दी बताओ। सर आई वाज थिंकिंग दैट आउटबाउंड वी आर गोइंग, सो ओ इंजन आउटबाउंड है क्या? ओ आउटबाउंड है क्या, पहले वो बताओ। ओ क्या है? ऑनवर्ड ऑनवर्ड। ऑनवर्ड क्या है? सर इंजन फेलियर एट सीपी। ऑनवर्ड स्पीड कहां से कहां के लिए मेजर हो रही है? सर ए टू पीईटी। वो ऑनवर्ड है क्या? नो सॉरी, पीईटी टू बी। बस। तो पीईटी पे इंजन फेलियर हो रहा है ना, तो कौन सा टेस्ट लूंगा मैं? रिड्यूस टेस्ट लूंगा ना। या शायद वापस गलत लिख दिया है आपने। देखो चेक करो, गलत लिखा होगा, इसलिए गलत लिख रहे हो आप। क्या लिखा है यहाँ पे? साफ लिखा है इंजन फेलियर में रिड्यूस्ड हो जाता है, बस। इंजन फेलियर में यही चीज, इंजन फेलियर में ये चीज रिड्यूस टेस्ट पे हो जाती है यहाँ पे। एंड इंजन फेलियर में ये टाइम टू सीपी, स्टूडेंट्स केयरफुल रहना, इंजन फेलियर में फुल टेस्ट लेना है आपको यहाँ पे टाइम निकालने में। क्यों? क्योंकि मेरा इंजन तो फेल हुआ ही नहीं ना ए टू सीपी तक। अब आया, बत्ती जली मितेगा लॉजिक। देखा, शॉर्टकट में आंसर दे रही हो तुम, वो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगी। मार्क्स 69 पे नहीं अटकना चाहते हम लोग, कम ऑन। मुझे ज्यादा फिक्र है तुमसे। यहाँ सर मेरा सही है ना? चेक करो, अच्छा चेक करो, एक सेकंड। मुझे विश्वास है तुम्हारा सही होगा, चेक करने दो। अभी फुल टेस्ट क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज टाइम टू सीपी, यार टाइम टू सीपी तो पहले कैलकुलेट होता है ना। अभी टाइम टू सीपी मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? पायलट को क्विक डिसीजन के लिए। अब मैंने टाइम टू सीपी कर लिया है, सपोज के 1 hour 53 minutes, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 hours। पायलट को इंजन फेलियर हो रहा है और पायलट चेक कर रहा है कितना टाइम हुआ है फ्लाइट टाइम का, और पायलट ने देखा 1.5 घंटे ही हुए हैं, चलो चलो घर चलते हैं वापस। इतना क्विक डिसीजन हो जाता है। और पायलट बोलेगा अरे 2 घंटे हो गए हैं और मेरा सीपी तो 1 hour 54 minutes था, चलो डेस्टिनेशन ही जाना है। क्विक डिसीजन। समझ रहे हो क्यों कर रहा हूं मैं सीपी? मेरे को क्विक डिसीजन लेना है, मेरे को घर जाना है कि वहां जाना है इंजन फेलियर पे। तो टाइम निकाल ली, डीपी निकाल लिया, डीसीपी,
दोनों में से कोई एक रेफरेंस भी मिल गया ना रियल टाइम में, जनरली टाइम आपको पता चल जाता है कितना टाइम मेरा गया है फ्लाइट टाइम पे। देख लो टाइम ऑफ सीपी से कम है, घर चले जाओ, टाइम ऑफ सीपी से ज्यादा है, डेस्टिनेशन चले जाओ। अरे मेरे को कॉकपिट में बैठ के कैलकुलेट नहीं करना है यार, जब तक कैलकुलेट करूंगा तब तक दूसरा इंजन फेल हो गया तो क्या। कॉमन सेंस। नितिका आ रहा है समझ में? हाँ सर। नंदिनी ओ, ओ सीपी से है, सीपी पे इंजन फेल हो गया है, तो ओ पे तुम पूरा टेस्ट क्यों ले रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओ तो सीपी टू डेस्टिनेशन ही होता है। होम बाउंड सही है तुम्हारा, क्योंकि रिड्यूस टेस्ट पे आपने वो 45 ऐड माइनस ऐड जो भी किया ऐड प्लस। ओ क्या है? ओ इज नॉट आउटबाउंड, ओ इज ऑनवर्ड। पुराना जो भी सिखा था सब भूल जाओ, पहले ही मैंने कहा आप लोगों को। ये जो आज सिखा रहा हूँ इट वाज सपोज टू बी अ फास्ट ट्रैक थिंग, आप लोग ले नहीं रहे हो फास्ट ट्रैक दिमाग में बस। ओ आउटबाउंड आपका होगा जो ये है आपका फुल इंजन, वो सिर्फ टाइम पे आएगा। लुक एट दिस नंदिनी, लुक एट दिस, कैन यू टेल मी इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड? 1 minute, sir. I'm trying. क्यों कंफ्यूजन आ रही है बच्चा? ध्यान दो ना, लॉजिक लगाओ ना बच्चा लोग, लॉजिक। क्या अंधे में तीर चला रहे हो आप लोग, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप लोग? मेरे को पता है तुम लोग को डायरेक्ट हवा में रख रहे हैं हम लोग, बिना वीएफआर सिखाए सीधा आईएफआर, मुश्किल हो सकता है, बट बी अप फॉर द चैलेंज है, इंस्ट्रक्टर भी तो अच्छा है। इट्स लाइक दैट। नहीं तो बताओ कंफ्यूजन कहाँ है, एक बार डिस्कस कर लो, देन वी आर डन विद दिस। फिर ब्रेक लेते हो और फिर पीएनआर करता है। बोलो बोलो, करो करो। So can you नितिका just explain the logic again? Just मैं नहीं one. बताना बार बार एक ही चीज, रिप्ले कर लो यूट्यूब पे जल्दी से। आदत बिगड़ गई है तुम सब की, हाँ? मैंने बिगाड़ दिया लग रहा है मुझे, इतना लीनियंट हो गए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रुक भाई, चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड। परफेक्ट है, बोला ना परफेक्ट है, मुझे विश्वास है। गुड जॉब अश्विनी, गुड जॉब। हुसैन का डीसीपी तो सही था, साफ लिखा है यार, टाइम पे क्या लेना है। ये नहीं देख रहे हो तुम लोग, इतना सामने सामने दिया है आप लोगों को, कम से कम ये देख के तो कर लो। हुसैन को अभी भी लॉजिक नहीं समझा है। क्यों नहीं समझा है? बिकॉज वो फंडा ही नहीं सोच रहा है, टी सीपी होता क्या है, रेडियो स्टैस होता क्या है। अब तुम समझ ही नहीं रहे हो तो फिर मेरा बोल के फायदा क्या है? हाँ हुसैन, क्या होता है तुम बताओ मुझे। So resistance is when you have one engine operative, वन इंजन ऑपरेटिव नहीं, वन इंजन फेलियर। one engine fail. क्या खुद का लाते रहते हो यार। अब यहाँ पे 4 इंजन डाल देंगे, वन इंजन फेलियर समझोगे तो तुम बोलोगे सर यार 3 इंजन फेल हो गए मेरी, फिर भी मेरा स्पीड इतना ज्यादा कैसे मिल रहा है। यहाँ यहाँ एक एक बेसिक चीज हो तुम गलत ले रहे हो तो तुम्हारा आगे भी गलत ही होगा ना। नंदिनी ऑनवर्ड स्पीड अभी सही है तुम्हारी, ये डीसीपी में डालना आपको। वेरी गुड। टीसीपी में नॉर्मल फुल इंजन आउटबाउंड स्पीड डालनी होती है बस। नंदिनी कंफ्यूजन कहाँ है? एक लूप होल है, वो लूप होल नहीं फिल करेंगे ना, बार बार कंफ्यूजन आएंगी। डोंट कॉम्प्रोमाइज, डिस्कस एंड क्लैरिफाई। हुसैन तुम बताओ क्या लॉजिक नहीं समझा भाई तुम्हें? So the one where why we use engine reduced as for DCP and full as for DCP. क्योंकि मेरा सीपी पे इंजन फेलियर हो रहा है ना इसीलिए, और क्योंकि जब मैं
ए से सीपी कैलकुलेट करता हूं तब मेरे को इंजन फेलियर नहीं होता है। मैं टेक ऑफ के इंजन फेलियर के साथ लूंगा क्या? इंजन फेलियर के साथ लूंगा क्या टेक ऑफ में हुसैन? मैं तो सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं इंजन फेल हो सकती है मेरी, बट थोड़ी ना इंजन फेलियर के साथ जाऊंगा मैं। थोड़ा तो लॉजिक लगाओ ना। तो सीपी तक तो मेरा फुल स्पीड ही होगा ना, सीपी पे इंजन फेलियर हो रहा है मेरा, तो रिड्यूस टेस्ट ही लूंगा ना। सीपी से कहीं भी जाऊं कम ही टेस्ट मिलने वाला है मेरे को, ज्यादा टेस्ट कर ही नहीं सकता मैं क्योंकि इंजन फेलियर है। अब बताओ क्या कंफ्यूजन है? I got it, sir. क्या गॉट इट बताओ मुझे। So TCP we calculate before only, before the flight only. That's why it's A to PET. So we take full speed, and DCP is we calculate from between. That's why. क्यों क्यों हम करते हैं? बिकॉज डीसीपी इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर आइदर वी कम टू डिपार्चर और डेस्टिनेशन वी टेक द सेम टाइम। तो वो वहां से शुरू होता है। तो वहां से शुरू होने के लिए वहां की स्पीड्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो रिड्यूस टेस्ट पे होगी अगर इंजन फेलियर रिज्यूम कर रहे हैं तो। डेफिनेशन ही आपका गलत था शायद, इसलिए आपको अभी भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अभी भी इसको पीएनआर के सिमिलर समझ रहे होगे। मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ पीएनआर की। चलो, एनी मोर डाउट्स? मितिका वेर आर यू? गुलशन किधर हो? नंदिनी, मनन? देयर सर। नंदिनी आंसर दोगी नहीं दोगी? फाइनल वेट कर रहा हूँ आपका, देख लेना है, चलो जल्दी। Sir, please show the options. चैतन्य ने ना कुछ तो गलत पढ़ लिया है हुसैन की तरह, वो निकल नहीं रहे दोनों के दिमाग से। सर यस, सर मुझे वो DCP 974 मिल रहा है, दैट इज 975 क्लोज अप एंड देन, बट मुझे टाइम सही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम पे आप डिस्टेंस या तो गलत ले रहे हो या स्पीड गलत ले रहे हो। क्या लिया डिस्टेंस स्पीड विल टाइम का? डिस्टेंस विल बी 975 हाँ, एंड स्पीड विल बी 475। बट वहां पे हेडविंड टेलविंड तो है ना, कुछ तो था ना आपको, वो नहीं वो नहीं अप्लाई करोगे? ए टू बी में क्या है आपको? हेडविंड कंपोनेंट है, टेलविंड कंपोनेंट है। ए टू सीपी पकड़ लो ना, ए टू सीपी दिया है ना आपको क्वेश्चन में। विंड फ्रॉम ए टू पीईटी दिया है ना। डिस्टेंस स्पीड टू पीईटी मिल गया आपको टाइम के लिए। स्पीड क्या लोगी आप? 475 तो लोगी, बट उसके साथ हेडविंड टेलविंड को तो करो। क्यों नहीं कर रहे हो वहां पे उसको? नंदनी टेल मी, ए टू पीईटी विंड कंपोनेंट इम्पैक्ट नहीं करेगा क्या स्पीड को? करेगा सर। तो करो उसको, फिर सॉल्व करो, आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्यों नहीं लिया विंड कंपोनेंट आपने रश में? कि नई चीज सीखी है इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, सिली मिस्टेक या लॉजिकल था वो? What is the reason you didn't apply the wind correction? सर मैंने सोचा ही नहीं उसके बारे में, चलिए। सब सोचना पड़ता है बस, है जो है। जी उसको कैसे स्किप कर दिया हमने? बिकॉज हमने नई चीज पढ़ी ना, तो इसलिए शायद हमने वो मिस कर दिया, ऐसा होता है। तो हमें केयरफुल होना चाहिए, एक चीज सीखते हैं तो शायद ब्रेन हमें दूसरी चीज भुला दे सकता है। बट तुम्हें समझा वो अप्लाई करना है कि नहीं करना है, उस पर कोई डिस्प्यूट है तो बताओ, अभी क्लैरिफाई करना है अपन को। एक मिनट सर। और तुम बोलोगे नहीं सर नहीं करना चाहिए, तो एक्सप्लेन वाई, सो आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड वाई। मिल गया सर आंसर।
हाँ, लेकिन डू यू वांट टू टॉक अबाउट दिस? No, sir, I got it. We have to add 45 tailwind. पहले क्यों नहीं किया था? ह्यूमन एरर था कि रीजनिंग थी कोई? बस उतना समझा दो, रीजनिंग थी तो वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो पता नहीं सर, बस ऐसे ही ले लिया 475. ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है। स्टूडेंट्स, आर यू नॉट हैप्पी? तुम लोग खुश नहीं हो गया? क्यों खुश नहीं हो तुम लोग? मैं तुम्हारा पीडीएफ बना रहा हूँ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के लिए। मैं लेक्चर के बीच में चैट नहीं करता स्टूडेंट, जो करता हूँ तो मैं सामने ही कर लेता हूँ, कॉल वॉल जो भी रहता है छोटा मोटा, कोई बच्चे लोग ही करते रहते हैं कॉल। पीएनआर तो बहुत इजी, आप टेंशन मत लेना। ये लॉजिक समझ गए तो पीएनआर तो कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला अलग है बस। चैतन्य, आ गया करेक्ट आंसर? अफर्म सर। बट अभी भी तुम श्योर नहीं हो ना कैसे आया? नहीं सर, श्योर हूँ। जो आंसर ना से शुरू होता है ना, मतलब श्योरिटी नहीं है उसकी। यस सर, आई एम श्योर। अब ये तो जबरदस्ती बोल रहे हो, अब नेचुरली बोलोगे तब यकीन होगा मुझे। टेक सम टाइम, आप तो नए नए हो। आप गुलशन के लिए मेरे को ज्यादा प्रेशर नहीं डालना आप लोगों पे। हुसैन, हुसैन बोलेगा सर मेरी क्या ही गलती है। एंड आई अंडरस्टैंड हुसैन, आई एम ऑन योर साइड, बट आई हैव टू बी स्टर्न, अदरवाइज तुम नहीं सीखोगे ये सब, और उसको गलत मत लेना। या मिलेगा? सर मेरा डाउट हो गया है, मेरे को आता है पीएनआर अच्छे से। मैं पीएनआर में रिड्यूस टेस्ट का इशू नहीं है आपको? नहीं सर, मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए पीएनआर के सॉल्व, कहाँ से गया? ऑक्सफोर्ड से जो आपने भेजे थे। मैं रिवाइज कर लूं क्या अभी? नहीं, अभी अभी आप लोग एक ब्रेक ले लो और पीएनआर भी मेरे साथ ही कर लो। जल्दी जल्दी कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहां रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है सर। बस हो गया, इतना टाइम नहीं लगेगा। एंड आप सोच रहे हो बाकी की वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जब भी फ्री मिल रहा है बाकी चीजें करते रहो। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो दे ही रहा हूँ, आपके पीछे भी उतना ही टाइम लग रहा है, इतना मत सोचो। हाँ यहाँ पे ठीक है अगर आप सर। अभी ध्यान नहीं दोगे तो वो 2-3 मार्क्स चले जाएंगे एग्जाम में। दिस इज माई कंसर्न, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे तो अच्छा ही है, मेरे को फ्री टाइम मिलेगा। आपको अगर लग रहा है पीएनआर हो गया है तो कोई इश्यू नहीं है मुझे। आर यू श्योर पीएनआर के सारे सम्स आते हैं आपको? हाँ सर, जितने आपने भेजे थे वो सब तो कर ही लिए हैं। बट आपको डाउट था ना इस पे, वो डाउट अभी क्लियर कैसे हो गया? पीएनआर तो हमने किया ही नहीं है। ये इंजन फेलियर वाला ही डाउट था सर, और डाउट नहीं था। तो पीएनआर पे नहीं आ रही इंजन फेलियर? पूछ रहा हूँ। नहीं, उसमें तो क्वेश्चंस में तो नहीं था सर इंजन चलो फेलियर। ठीक है। अभी आप, बस एक क्वेश्चन कॉन्वर्जेंसी का डाउट है, बस एक क्वेश्चन सर। हाँ वो मैं आपका 1-on-1 करा दूंगा, ठीक है सर। टाइम निकाल के कभी भी, डोंट वरी। एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ पहले, ये भेज के, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से देखो, इनके आंसर्स भी दिए हैं एंड आई थिंक इनकी सोल्यूशन भी दी है, अ पार्ट ऑफ इट की सोल्यूशन भी दी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको मैं ईमेल कर रहा हूँ। इफ यू फील हो गया है तो आप मत करो, बट मैं सोच रहा हूँ कि आप कर लो, बस एक एक सेशन और अटेंड कर लो, वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा पीएनआर का। बट आपको लग रहा है हो गया है तो फिर आप मत करो, चलेगा, आपकी मर्जी। बट आई सजेस्ट एक बार कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बट योर कॉल, आई वोंट फील बैड कि यार आपने नहीं किया अभी आप। आई विल बी ऑलवेज ऑन योर साइड ओनली स्टूडेंट्स, तो ऐसे गलत मत लेना। फटाफट ये ईमेल कर देता हूँ सबको मैं। ओके, हाउ मेनी ऑल वांट टू अटेंड द पीएनआर सेशन राइट नाउ? एग्जाम स्टूडेंट्स बता दो बस मुझे, किस किस को नहीं करना है, तो फिर मैं किसी के लिए नहीं रखता हूँ। आप लोग कर लो अपना, बाकी हम लोग कर लेंगे, बाकी बच्चे लोग।
Others can just do CP thing. I don't mind. मुझे बताओ, पर्सनल Sir, I चैट में want the बता दो, revision. पर्सनल चैट में बता दो। मनन अश्विनी को नहीं चाहिए? नहीं सर, चाहिए चाहिए। मनन को तो जब तक हाथ नहीं जोड़ूंगा कुछ यस बोलूंगा। सर, चाहिए चाहिए। ओके, चलो ठीक है। ओके, विल मीट बैक एट 1 o'clock एवरीवन। सो सेशन ऑन ही है, मैं बस उसको जैसे ब्रेक होता है वैसे ईमेल भेज दिया है। सीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो सब लोग, कहीं डाउट है तो मुझे बताना। एंड या, आई सी ऑल एट 1 o'clock एवरीवन। आराम से 1 घंटे में, एक 1 घंटे में कर लेंगे पियानो, और पूरा पूरा फास्ट फास्ट फास्ट। ज्यादा से ज्यादा टारगेट आधे घंटे का रहेगा, मुझे लगता नहीं आधे घंटे में हो पाएगा। सो दैट्स द आइडिया एवरीवन। 1 से 2, 2 से ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, जितना हुआ उतना हुआ, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, सो मीट मी एट 1 o'clock एवरीवन।
Students, are we back? चलो फटाफट करते हैं. What's wrong, host? Screen sharing. Stop. Participants make host. No, leave. Okay. Hussain, Manan, Yes, sir. Mitika, Ashwini, Nukul, Chaitanya, Gulshan, Nandini. Are we back? Affirm, sir. Affirm, sir. Affirm, Yes, sir. sir. Nandini, are we back? So the reason, probably, Nandini, you were confused initially, or Nukul, you are confused because the last time when you have studied it, you first studied PNR. And in the PNR, O was outbound speed. So maybe that's why you were confused initially with respect to CP. Are you getting me? So don't confuse yourselves with that. Okay. Just be very logical and you'll get the correct answers. I'll stick with this only. CP is very easy. But why are we not able to see the screen? Stop share. Share. PNR generally is point of safe return or point of no return. Quickly write down the definition so that we know what the definition is. Okay. And then we'll quickly do the formulas. The key to remember what to do when between two things. Okay, students, key to remember, the actual thing to remember, between two things is CP. We first find DCP and then we do simple time is equal to distance upon speed formula. Distance to CP upon the ground speed required to reach the CP, which will be the actual without an engine failure. When it comes to PNR sums, PNR is now called as point of safe return for us. In that, the first formula that we get, okay, point of safe return. In this, the point that we get is that point from where it would still be safe for us to return back.
Why are we returning back? Because destination is not available for us anymore. What are the reasons the destination will not be available for us? It could be some political situation where the destination is closed. It could be bad weather at the destination, some disaster at the destination which it cannot help us get down. Can we not go to destination alternate? We can if we have, but in these cases, we are assuming we don't have destination alternate. So now there are two key things that you have to remember when it comes to theoretical questions. Okay. This is also called as PNR, firstly, that is point of no return. We don't call it point of no return anymore because it confuses people that don't return. So we say point of safe return. Let's assume the same. A to B. Always I'll have this A to B. If I say this point is point of safe return, it means my pilot will be flying up to here and can fly back. All within, there is a term called as within safe endurance. Okay. Safe endurance means total time with, so I'll write SE as safe endurance. Safe endurance is total time with available fuel without exhausting mandatory reserves required over departure or departure alternate during return. Read the definition quickly, see if you understand the definition. What is safe endurance? It's the total time with available fuel. So the total time aircraft can fly. So that is the added point here. Total time aircraft can fly with available amount of fuel, okay, without exhausting mandatory reserves. What are these mandatory reserves? So let's say my pilot is flying nicely, going, and realizes reaching this point somewhere before the PSR. Okay. This point, pilot realizes that the destination is closed. So what the pilot would do? The pilot would say, okay, let's go back. Because there are no other alternates in between. There could be only one alternate near your departure aerodrome. We call it departure alternate. In this case, when my aircraft is coming back, it should have exhausted up to the safe endurance time fuel only, but it should still have reserve fuel required. Maybe it might be a delay given to you before you land. So that mandatory reserve is required. So total endurance, what you could say is, therefore, total endurance means max time aircraft can fly in air, okay, with all fuel, where reaching landing, wherever the landing is, fuel tanks are empty. Okay. So for PSR, we take only safe endurance. For PSR, we take safe endurance. And this is denoted by E only. E is the code. So just for your reference, I'm giving you mandatory reserves is equal to total endurance minus safe endurance, like this. Or you can say
safe endurance is equal to total endurance minus reserves, whatever reserve fuels you have. Okay. Generally, in the question, they'll give you safe endurance. You use the formula. Okay. Write down the formula and quickly solve. I have a rule. Whenever I'm referring, unless it's not an exam, always check the formula sheet for the rules. It really helps me strengthen my formulas. Okay. So formula, you have to calculate distance to PSR, that is point of safe return, and time to PSR. PNR, PSR is the same thing. For normal questions, start with time to PSR or PNR. Okay. Start with time to PSR. Older students, you might be thinking, sir, alag alag क्यों पढ़ा रहे हैं? Because in aviation, things get revised, students. So we have to be up to date. समझ, हम पुरानी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो थोड़ा नया भी हमें डालना पड़ता है, but things are same. So the formula is for time to PSR, you can write simple words like this. Time is equal to E into H outbound speed plus homebound speed. Now, here the outbound speed and the time calculation for CP outbound speed are the same from here to PSR. That is our outbound in simple words. Okay. H is nothing but homebound speed. So we will say T is equal to time to PSR. Okay. E is equal to safe endurance. Okay. H is equal to TAS homebound that is PSR to A. Okay. PSR to A. Okay. Some people will say ground speed. We can say TAS. One and the same thing in these situations. Outbound speed is equal to TAS from A to PSR. Okay. And H is equal to TAS homebound only. So homebound speed is the same as H. What is this error? Homebound speed is the same. H is equal to the TAS homebound is equal to homebound speed only. H is equal to homebound speed only. Over here you write. Is there any confusion so far? Students, any confusion? Let me know. I hope everyone is paying attention. I got my formula. Let's find out the and yeah, time we got
Therefore, distance to PSR will be very simple calculation is equal to time to PSR that you have found above into the speed. Speed with speed, you will say outbound TAS. Because till PSR, you're calculating the normal TAS only. Speed, that is outbound TAS. Okay, do not multiply speed into outbound TAS here, please. Distance is equal to speed into time. In bracket, I'll write this formula. Very important formula for general navigation. Couple of sums will come based upon this basic formula also. Distance is equal to time into speed. Basic formula. Students, good revision. Now only have to calculate. Done. All with me? Ashwini, Hussain, Manan, Mitaka. Majority, you have to do it thoroughly. Others can revise even if they mistake, which I'm assuming they will not. Nandini, clarity आ रही है यहाँ पे? फॉर्मूला ही अच्छे से लिख दिया है कि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. चलो, solve. E means safe endurance only in this case, okay? फटाफट आंसर्स दे देना चैट बॉक्स में, ठीक है? E is equal to 10 hours. TAS is equal to 300 knots. Quickly write, find distance and so distance to PNR or PSR and time to PNR or PSR. Use the method that I'm teaching right now. That's it. For number 1, in still air, number 2, 50 knots, headwind. This headwind is to the outbound only. We are just going out to the PSR. So for us, it's a headwind. And third, 50 knots, tailwind. Chalo. Can you do it? Verbally give me your answers. Yeah, chat box. Give me answers in सर the वो chat. दिखाओ ना सर क्वेश्चन आपने डाली है. अरे स्टूडेंट्स, आई हैव टू रीस्टार्ट द सिस्टम. क्वेश्चन डिले क्यों कर रहे हो आप लोग लिखने में? क्वेश्चन डिले क्यों कर रहे हो? फोकस जा रहा है क्या? एंड लिखो, मैं वर्बली बोल रहा हूँ. एंड्योरेंस 10 hours, टास्क 300 knots. Find time to PSR and distance to PSR for 3 situations. First situation, still air. Second situation, 50 knots, headwind. And third situation, 50 knots, tailwind. Students, I have to restart the screen. वो hang हो रहा है, इसलिए मैंने हटा दिया वहां से. अच्छा, आपने बता दिया. जब तक मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ तब तक आप ये कैलकुलेट कर लो. देखो, मैंने मितिका वापस लिखा है क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. आई होप एवरीबॉडी गॉट द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंटरप्ट नहीं कर रहे हो मतलब आपको फटाफट समझ में आया. आप लोग टाइम का टेंशन मत लो. अब जब पढ़ रहे हो तो हो जाएगा फटाफट. हो गया क्वेश्चन? सबको मिल गया क्वेश्चन? 50 नॉट्स हेडविंड, 50 नॉट्स टेलविंड. ये नॉट्स ही है जो गड़बड़ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे. हेडविंड, टेलविंड. ये आउटबाउंड स्पीड को इम्पैक्ट होगा. हम पीएसआर जा रहे हैं, पीएसआर से वापस आने का प्लान कर रहे हैं, तो हमें वो पीएसआर का डिस्टेंस पता करना है. व्हेन देयर इज नो एयर, नो विंड, व्हेन देयर इज हेडविंड एंड व्हेन देयर इज टेलविंड. 3 अलग अलग सिचुएशन है ये. तीनों के लिए मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ. मितिका, समझ आया क्वेश्चन? हाँ सर. So the 10 hour will be in minutes. No? We need to put.
स्पीड आर मिनट्स, आर नॉटिकल माइल्स है तो एंड्योरेंस भी आर में ही आएगा, मिनट में नहीं आएगा। हमेशा वो लॉजिक रखना है आपको दिमाग में। स्टूडेंट्स आपको कुछ और भी चाहिए क्या इसमें? एंड्योरेंस मिल गया है, स्पीड मिल गया है, डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अश्विनी क्या लिखा है, गलत है आंसर तुम्हारा। यस सर, यस सर। बहुत ज्यादा गलत है, कितनी बार बोला है गलत आंसर चेक करने से पहले भेजा करो। स्टूडेंट्स एनी आंसर यू सबमिट क्रॉस चेक ना, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। एग्जाम में एक आंसर मिल जाता है, उसको क्रॉस चेक करो सबमिट करने से पहले। So still air time to CP will be total endurance, that is 10 into फॉर्मूला क्या था, h होमबाउंड स्पीड। तो स्टिल एयर में आउटबाउंड एंड होमबाउंड स्पीड सेम होने वाली है मेरी, तो 10 into 300 अपॉन O plus H, आउटबाउंड स्पीड प्लस होमबाउंड स्पीड हियर, सो सेम स्पीड है, 300 plus 300, तो माय टाइम इज 5 hours. 5 hours। distance is equal to time into speed 5 into speed क्या है 300 is equal to 1500 nautical miles। Okay, everyone getting the same answer? Very good। चलो हेडविंड कंपोनेंट के साथ करते हैं। हेडविंड कंपोनेंट में मेरा आउटबाउंड स्पीड कम होने वाला है, सिंपल। सो टाइम इज इक्वल टू 10 इंटू होमबाउंड स्पीड बढ़ जाएगा, बिकॉज होमबाउंड को ये हेडविंड टेल विंड लग रही है। सो 350 डिवाइड बाय आउटबाउंड मेरा कम हो रहा था 250 प्लस होमबाउंड मेरा बढ़ रहा है। सो मुझे टाइम क्या मिल रहा है यहाँ पे, 10 into 350 is equal to 3500 divided by 600। स्पीड आउटबाउंड मेरी कम हो रही है। लेट्स जस्ट चेक, आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट। देखिए चेक कर लेता हूँ, दिस इज करेक्ट, 1458 nautical miles distance। Anybody confused here? Please talk to me। मितिका, मनन, अश्विनी, हुसैन, यह आया समझ में सेकंड वाला? Yes, sir. मितिका एंड अश्विनी, अपन सर। Yes, sir. मितिका कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो। समझ आया सर। तीसरे वाले का आंसर दो। नंदिनी, गुलशन, नंदिनी समझ आ रहा है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir, not in this one. हुसैन, गुलशन, चैतन्य, कोई कंफ्यूजन? No, sir.
Sir, in second point, 50 knots headwind, so our speed will reduce na. कौन सा स्पीड रिड्यूस होएगा? आउटबाउंड ना? Yes sir, outbound. तो किया ना मैंने, रिड्यूस किया ना। फॉर्मूला सही लिखो। कहाँ नहीं रिड्यूस किया मैंने? किया ना रिड्यूस। So 10 into 350. तो वो तो होम बाउंड स्पीड है ना बच्चा। रिटर्न आ रहा हूँ ना मैं, वहां से रिटर्न आऊंगा, वो होम बाउंड स्पीड होता है ना, PSR टू बैक। तो उसको तो Okay. टेलविंड लगेगा ना। जो मेरा जाते वक्त हेडविंड था वो आते वक्त टेलविंड हो गया, तो वो बढ़ेगा ना होम बाउंड। तुम क्यों कम कर रहे हो उसको नुकुल? हाँ, क्या हो गया बताओ? सेम कंफ्यूजन। नो सर, मैंने शायद फॉर्मूला गलत लिख दिया था इसमें। तो सही करो फॉर्मूला, क्यों गलत लिखा है? मैंने तो साफ साफ दिया है, देख लो स्क्रीन पे, देखो फॉर्मूला, यस सर। बताओ क्या एरर है अभी। चलो तीसरे का आंसर दो मुझे जल्दी जल्दी। एग्जाम स्टूडेंट्स, टाइम भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए यार। अश्विनी, क्या है यार ये सब? 4.16 सर। पूरा आंसर देने में क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? गुलशन, तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है मुझे। टाइम, मितिका जल्दी टाइम दो मुझे। मनन टाइम दो यार। 10 इंटू टेल विंड, होम बाउंड। तो टेल विंड मुझे मेरा आउटबाउंड जो स्पीड था उसको बढ़ाएगा। सो आउटबाउंड में मैं 350 लिख देता हूँ। बाकी जो होम बाउंड है उसको टेल विंड हेडविंड लगने वाला है। सो मैं इधर 250 ले रहा हूँ, मैं इधर भी 250 ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 10 इंटू 250, 2500 डिवाइड बाय 600। मुझे आंसर तो ये आ रहा है 4.16 आवर्स एज पर द कैलसी। डिस्टेंस निकाल 4 के hours रखता हूँ। 10 यस सर, minutes. करेक्ट। आप लोग है ना, मिनट्स में मत जाओ अगर आपको डिस्टेंस भी निकालना है, डेसिमल ही रखो आप लोग, Awesome. है ना। बाद में ऑप्शंस को मैच करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। इनटू स्पीड आउटबाउंड, आउटबाउंड मेरा स्पीड था 350, 4.16 इंटू 350, क्या मिल रहा है मुझे? इज इक्वल टू 1458 नॉटिकल माइल्स। गॉट इट एवरीवन? नुकुल नहीं समझ आ रहा है? आ गया सर आंसर। सर आपको मैसेज ही नहीं जा रहा है। आएगा, अभी आएगा। किधर? जूम चैट पे? हाँ रुको मैं तुम्हें भेजता हूँ, उसको रिप्लाई करो तुम। किधर है? हियर, इस पे रिप्लाई करो, आ जाएगा। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तीन चार थंब रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थियरी क्वेश्चंस, जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, लिख लो। So it's 1456 nautical miles. नहीं, इट्स 1458 नॉटिकल माइल्स। राइट डाउन। स्टूडेंट्स अभी ऑब्जर्वेशन देखो, इनमें से कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? 1500 ज्यादा है। ये कहाँ आ रहा है ज्यादा? स्टिल एयर रेंज में आ रहा है। बाकी हेडविंड या टेलविंड कंपोनेंट दोनों मेरा डिस्टेंस रिड्यूस ही कर रहे हैं PNR या PSR का। तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ थंब इन स्टिल एयर। डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम्स में आएंगे। मार्क द करेक्ट सेंटेंस, MCQ, फिल इन द ब्लैंक। इन स्टिल एयर, distance to PSR is greatest. True or false? True. प्लीज ये मैं रिटर्न दे रहा हूं, ये गलत मत मार के आना आप, प्लीज खुद का लॉजिक नहीं लगाना है, पढ़ लो बस जो दिया है आपको वहां पर। जो लॉजिक आज डेवलप कर रहे हैं वो ही लगाना है एग्जाम में। सेकंड पॉइंट लिखो, यहां कंफ्यूज करेंगे। हेडविंड कंपोनेंट रिड्यूसेस द डिस्टेंस, टेलविंड कंपोनेंट इंक्रीजेस द डिस्टेंस। नो, headwind component increases the distance, tailwind component reduces the distance to PSR. No. Then what is the truth? This is the truth. Write down. Any wind component
reduces distance to PSR, be it headwind और tailwind. देखा आपने, हेडविंड एंड टेलविंड दोनों मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, मेरा डिस्टेंस कम दे रहा है. सो आई हैव टू हैव दैट इन माइंड कि चलो आपको 1500 नॉटिकल माइल्स का बफर नहीं मिल रहा है डिसीजन लेने के लिए, कब मिल रहा है आपको, तो उसका आपको ध्यान रखना है. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि पायलट डिसाइड कर सके कि रिटर्न आना सेफ है कि नहीं है. अगर रिटर्न आना सेफ नहीं है तो पायलट क्या करेगा? पायलट कुछ नया एयरपोर्ट ढूंढेगा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, फिर या जबरदस्ती वो डेस्टिनेशन में जाके लैंड ही करना पड़ेगा उसको. कुछ नहीं कर सकता, वो रिटर्न नहीं आ सकता. अगर मेरे पायलट को रिटर्न आना है तो उसको फिर ध्यान देना होगा कि पीएसआर पहुंचने से पहले ही, लिसन टू दिस, पीएसआर पहुंचने से पहले ही एक बार डेस्टिनेशन से वेरीफाई कर लूं कि मेरा लैंडिंग तो पक्का है ना ऐसे एयरपोर्ट्स पे. तो पीएसआर इसलिए जरूरी हो जाता है. तो अगर मेरा पीएसआर 1458 पे आ रहा है तो मैं 1200 या 1300 नॉटिकल माइल्स पे पहुंचते ही डेस्टिनेशन से एक फाइनल कंफर्मेशन ले लूंगा कि यार आप लोग बता दो भाई पक्का तो है ना, कुछ इश्यू तो नहीं होगा वहां पे. बिकॉज वहां पे कोई और ऑल्टरनेट है नहीं, मेरे पास इतना फ्यूल है नहीं. वो बोलेंगे नहीं अभी भी 50-50 डाइसी है, आप बोलो मैं थोड़ा और आगे जा सकता हूँ 100-200 नॉटिकल माइल, तब तक मुझे बता दो. तब तक आप 50-50 रखोगे तो आई थिंक मैं तो रिटर्न जाना पसंद करूंगा, कि मुझे मेरी प्लेन और मेरे पैसेंजर्स को सेफ रखना ज्यादा जरूरी है. दिस इज वेर पीएसआर कम्स इनटू प्लेस, वेर डेस्टिनेशन के पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है. तो जहां पे भी आइलैंड्स होते हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड नेशंस, वहां पे ये सब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे हमें ऑल्टरनेट तो मिलेगा नहीं फिर. लकी इंडिया में वैसा होता नहीं है, बट आप अंडमान जाओगे तो शायद आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. वहां पे एक ही रनवे है ना, पोर्ट ब्लेयर पे है सिर्फ. आर वी फॉलोइंग स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड द लॉजिक? दीज टू थंब रूल्स, और दो थंब रूल है, लिख लो. आपका आधे से ज्यादा काम हो गया पीएसआर का फिर. The distance to the point of safe return. अभी बाय हार्ट कर लो ये सब पॉइंट्स, एग्जाम स्टूडेंट्स अभी बाय हार्ट कर लो ये सब पॉइंट्स. द डिस्टेंस टू पॉइंट ऑफ सेफ रिटर्न फॉर head or tailwind component is of the same value. भले आपका टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बट देखो डिस्टेंस तो सेम है, भले फिर आपका हेडविंड कंपोनेंट हो या टेलविंड कंपोनेंट हो. बट द हेडविंड और द टेलविंड यहाँ लिखो ऑफ सेम वैल्यू. अगर वैल्यू चेंज होती है तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा यहाँ पे. एंड लास्ट रूल है, जैसे सीपी में हमने पढ़ा था, ग्रेटर द विंड कंपोनेंट, ग्रेटर इज द शिफ्ट ऑफ द सीपी इनटू द विंड अवे फ्रॉम द स्टिल एयर सीपी रेंज, राइट. यहाँ पे अलग हो रहा है. द ग्रेटर द विंड कंपोनेंट, greater is the reduction. सो है ना, ये एविएशन बुक्स में है ना पैराडॉक्स होता है, ग्रेटर एंड रिडक्शन तो कंफ्यूज है स्टूडेंट. तो बोले ग्रेटर तो मतलब सर बढ़ना ही है, ग्रेटर रिडक्शन मतलब कोई भी विंड कंपोनेंट मेरा डीपीएनआर कम ही करता है, बट विंड कंपोनेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा डीपीएनआर और छोटा छोटा होता जाएगा, डिस्टेंस टू पीएनआर फ्रॉम द डिपार्चर पॉइंट. Greater the wind component, greater is the reduction in the distance to the PSR. ब्रैकेट में लिखो compared to the still air distance और range, एक ही बात. तो ओके
एनी डाउट्स? अभी एक इक्वेशन कर लो खुद से सॉल्व. I want perfect answers. Go through the thumb rules quickly. कोई डाउट्स है? अभी रट लो, अभी फाइनलाइज कर लो. एग्जाम स्टूडेंट्स अभी रिवाइज कर लो पूरा पूरा. और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बोलो सर नहीं समझ आया है, रिवीजन के टाइम शायद आपकी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा. एंड पीपल आई वुड लाइक टू सी ऑल. है फाइनल चल रहा है, लास्ट लास्ट. तुम्हारे चेहरे पे डिपेंड करता है मैं आगे का पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा. डन. Aircraft is flying, write down the question, to destination at 220 knots. Okay. With wind of plus 45 knots. प्लस 45 नॉट्स मतलब जाते वक्त आपको मिल रही है टेल विंड. करेक्ट स्टूडेंट्स? टोटल एंड्योरेंस, रिमेंबर टोटल एंड्योरेंस हमें नहीं चाहिए. टोटल एंड्योरेंस इज 7 hours 40 minutes. अगर इसको टाइम डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो 40 मिनट्स को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. सेफ एंड्योरेंस इज 6 hours. चलो अच्छा है, सेफ एंड्योरेंस दिया है हमें, कोई इश्यू नहीं है. ओके. नो इंजन फेलियर मतलब, नो इंजन फेलियर मतलब यहाँ पे इंजन फेलियर आएगा ही नहीं सर. पीएसआर में इंजन फेलियर आता ही नहीं है. मतलब आपको एक ही टेस्ट यूज करनी है. पीएसआर इज फ्यूल क्रिटिकल. आया समझ में? तो कभी डेडिकेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे थंब रूल में एक और पॉइंट ऐड कर दो. पीएनआर और पीएसआर इज अ फ्यूल प्रॉब्लम. इज अ फ्यूल प्रॉब्लम. अभी लिख दो, कैलकुलेट डिस्टेंस टू पीएनआर और पीएसआर एंड टाइम टू पीएसआर. तो पहले टाइम निकाल लो फिर डिस्टेंस निकाल लो. टाइम का ही फॉर्मूला दिया है आपको, डिस्टेंस का नहीं दिया. ठीक है. डिस्टेंस का तो सिंपल है, टाइम इनटू स्पीड. स्पीड क्या होगी? आउटबाउंड होगी. टाइम जो आप निकालोगे वो हो जाएगी आपके. चलो आराम से करो, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, प्लीज चेक कर लेना एक बार करेक्ट आंसर भेजने से पहले. जस्ट 2.5 आवर्स देखा जाए तो 2 hour 30 minutes के पास ही होता है. तो टाइम तीनों में सेम ही दी गई है मुझे. तो बस डिस्टेंस तो पहले टाइम निकाल लो फिर डिस्टेंस निकाल लो सही सही. चैतन्य दिखाई नहीं दे रहे हो. अश्विनी, नंदिनी. नंदिनी इट्स फाइन. Nandini, are you confused or stressed? I hope you have not given up. No, sir, no.
आराम से करो, पहले टाइम निकालो, फॉर्मूला सही लिखो। चलो चलो जल्दी जल्दी। तो इन सब सम्स को सिंगल लेग बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना सर सिंगल लेग क्या है। सिंगल लेग मतलब वन वे जर्नी, बस उतने ही पूछेंगे आपको। भेज दिया सबने आंसर, चेक कर रहा हूँ मैं। मिथिका आसानी से हो रहा है क्या? मनन आसानी से हो रहा है? हुसैन Yes, sir. आसानी से हो रहा है? Yes, sir. अश्वनी, हुसैन, गुड जॉब। गुलशन, गुड जॉब। 3 आंसर्स आए हैं, तीनों करेक्ट है, वेरी गुड। हुसैन, कंफ्यूजन? No, sir. मनन रह गया है। समटाइम्स द क्वेश्चंस कुड बी कंफ्यूजिंग। आपको बोलेंगे कि आपका हेडिंग या आपका ट्रैक ये है और विंड का ट्रैक ये है, डायरेक्ट हेडविंड टेलविंड नहीं दिया होगा, तो देख लेना अगर विंड रेसिप्रोकल है तो हेडविंड हो गया, और विंड भी सेम डायरेक्शन है तो टेलविंड हो गया। तो वो लॉजिक तो हमेशा रखना आप लोगों को, हाँ? कि कभी कभी एग्जाम्स में सिंपल सम्स नहीं होंगे, बट वो डायरेक्शन रेसिप्रोकल सोचना पड़ता है बिफोर आंसरिंग। दिस इज वाई पीपल प्रिफर टू सॉल्व क्वेश्चन बैंक दिस दैट, तो ताकि उनको उनको ये नहीं समझ आए कि सब लॉजिकल है। उनको ऐसा लगता है कि अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, पूरा जनरल नेविगेशन आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ड्रिफ्ट, हेडिंग, कोर्स वगैरह वगैरह, उसके बाद ही आपको ये निकालना है। सो ऑलवेज यूज योर साइंटिफिक सॉरी नैव कंप्यूटर, एंड नैव कंप्यूटर पे आपको बहुत कुछ अपने आप मिल जाएगा, जस्ट प्ले विथ इट एंड गेट मास्टरिंग इट। सो अभी फ्री टाइम पे है ना, नैव कंप्यूटर के साथ 3 बैटरीज एक्स्ट्रा रखो स्पेयर में, और उसके सारे ऑप्शंस को है ना चेक कर लो सारे। कभी कभी है ना कुछ नहीं आएगा ना, वो नैव कंप्यूटर के थ्रू आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, ओनली इफ यू आर अवेयर नैव कंप्यूटर में क्या क्या आता है। सो माय सजेशन इज फ्री टाइम पे है ना पूरा नैव कंप्यूटर का एक एक एलिमेंट में जा जाके देख लो कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ पे क्या क्या है। एक दो बार देखोगे एग्जाम में पूरा अपने आप क्लिक हो जाएगा। देयर आर स्टूडेंट्स जो खुद से पढ़ के जाते हैं, नैव कंप्यूटर मास्टर कर लेते हैं ना, आराम से पास हो जाता है। सोचो, लाइक अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, खुद से भी करते हैं तो। पास फेल तो चलो ठीक है, 60 भी अच्छा ही है, खुद से किया है किसी ने तो 65 भी अच्छा है, भले पास नहीं हो रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। So approximately 35 to 40 you can solve based upon CX3 on any given day in the exam. सोच समझ रहे हो, 35 to 40 तो उतना आपको यूज करना ही है एग्जाम में।
आप नहीं कर रहे हो मतलब सोचो आप वो फायदा नहीं उठा रहे हो CX3 का। मितिका आंसर नहीं आया है, वर्बली बता दो जल्दी से। नंदिनी आंसर बता दो। और मनन तो है नहीं। और कौन बचा है फिर? नुकुल बचा है। चलो तीनों बता अल्फा दो सर आंसर। 632 नॉटिकल माइनस। करेक्ट, गुड जॉब। नुकुल आंसर नहीं दे रहे हो? चैतन्य आंसर नहीं दे रहे हो? नहीं आया सर। क्यों, फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हो सही? अभी क्या बोलूं मैं? कहाँ गड़बड़ हो रही है बताओ? फॉर्मूला क्यों गलत लिख रहे हो? मैं बोला ना फॉर्मूला शीट रखो साइड में, फॉर्मूला देख देख के करो। मिस्टेक क्या हो रही है? सर मेरा टाइम 3 आवर्स आया है पर मेरा डिस्टेंस सही आया है। तो तुमने फॉर्मूला गलत लिया है टाइम में। पर फिर टाइम डाल के ही तो आया है डिस्टेंस भी। तुम गलत लिखा है कहीं, चेक करो फटाफट। क्या लिखा है फॉर्मूला? यही बताओ मुझे। सर वापस सॉल्व एंड्योरेंस। करो। एंड्योरेंस क्या लिया है? एंड्योरेंस 6 6 इंटू वॉट? 6 into 2 65। 265 क्यों ले रहे हो अभी? होम बाउंड है ना स्पीड। हाँ तो ये तो आपको हेडविंड लगेगी ना, जो टेल विंड थी आउटबाउंड के लिए। ये क्या एक बेसिक कंफ्यूजन है? मितिका ये समझ नहीं आया क्या फंडा? आ गया सर। होम बाउंड है तो जो भी मुझे प्लस हो रहा था आउटबाउंड का वो माइनस हो जाएगा, ये दिमाग में याद रख लो बस। फॉर्मूला में होम बाउंड है तो होम बाउंड मतलब मैं PSR से रिटर्न जाऊंगा तब का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मुझे जाते वक्त हेडविंड मिल रहा था तो आते वक्त वो टेल विंड हो जाएगा ना मेरे लिए। सॉरी, जाते वक्त टेल विंड मिल रहा था तो आते वक्त वो हेडविंड हो जाएगा ना मेरे लिए। तो हेडविंड तो मेरा 220 को कम करेगा ना। स्टूडेंट्स, वाइल आई एम गोइंग, जब मैं जा रहा हूं अगर मुझे +45 मिल रहा है मतलब टेल विंड मिल रहा है। जब मैं आ रहा हूं तो वो -45 हो जाएगा ना, बिकॉज मेरे लिए वो हेडविंड है। मितिका क्यों हो गए कंफ्यूज? जल्दी ये क्लैरिफाई करो और सेशन एंड करना है हमें यहाँ पर। ये हाँ सर कंफ्यूजन सॉर्ट नहीं सर। करोगे ना, कोई आंसर करेक्ट नहीं आने वाला आपका। फिर आप बोलोगे सर पेपर तो अच्छा था बट पता नहीं क्या हुआ। मैं बोलूंगा ये हुआ, और कुछ नहीं हुआ। बताओ, चलो ये फिगर आउट करो। क्यों नहीं आ रहा है बताओ सही आंसर? सर फॉर्मूला बस यही गलत कर दिया था। वापस फिक्स करो फॉर्मूला। क्यों आ रहा है गलत बताओ? हेडविंड में आपने 265 क्यों लिया है? हेडविंड है वो। सर होम मुझे बाउंड, लगा होम कि बाउंड। ऐड हो जाएगा आते समय। आते समय कैसे ऐड होगा? ये जाते समय का है ना। फ्लाइंग टू डेस्टिनेशन लिखा है ना। तो जा रहा हूं मैं 220 नॉट्स, वहां पे मुझे विंड मिल रहा है +45 मतलब टेल विंड। वो विंड चेंज नहीं हो रहा है, रिटर्न आते वक्त भी आई एम अज्यूमिंग वो विंड चेंज नहीं होने वाला है। तो आते वक्त मुझे हेडविंड मिलेगा कि टेल विंड मिलेगा? हेड। तो हेडविंड मिल रहा है तो मेरा टास्क कम होगा कि ज्यादा होगा होम बाउंड? कम। तो डालो अभी फॉर्मूला में। बट मुझे एक स्ट्रैटेजी तुम्हारी अच्छी लगेगी तो ऑप्शन सही चूज कर रही हो। बट हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा USP सही है। पहले भी ऑप्शन तुमने सही चूज किया था बट तुम्हारा आंसर आधा सही था आधा गलत था। तो इस पे हम पूरा डिपेंड नहीं करेंगे। एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा बट अब थोड़ा टाइम है तो पूरा सही कर लेते हैं ना, क्या पता ऑप्शन इतने इजी ना हो समझने के लिए। वो लोग जानबूझ के आपको ऑप्शंस देंगे जो आपका गलत आंसर मैच हो रहा है स्टूडेंट्स। होम बाउंड में प्लस माइनस हो जाता है ऐसे लिख दो, और माइनस प्लस हो जाता है सिंपल वर्ड्स में अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो। चैतन्य आंसर तो तुमने भी सही दिया है बट कुछ कंफ्यूजन है? Negative, sir. I got it correct. मितिका बताओ कहाँ अटके हुए हो? बताओ, तुम बता नहीं रही हो जल्दी। सब सही आ गया सर, क्वेश्चंस आ गया आंसर से। तो मिस्टेक क्यों की उस पे डायरेक्ट? वो मिस्टेक क्यों हुई मैं जानना चाहता हूँ कि वो वापस ना हो। सर वही सर, हेडविंड में टेलविंड में कितनी देर से कंफ्यूजन। मैं बोल रहा हूँ ना, घाई मत करो घाई मत करो। किसी और को आ रहा है गलत आंसर? सर मुझे भी गलत आ रहा है। नंदिनी सेम मिस्टेक वापस कर रही हो, क्यों गलत आ रहा है बताओ? आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो रिटर्न वाला वो होगा ना, एक मिनट।
बताओ बताओ जल्दी बताओ। मुझे Yes, ये sir. नहीं The return speed will be homebound, right? या Okay. स्टूडेंट्स यहाँ पे समझाया आप लोगों को। होम बाउंड इज इक्वल टू PSR टू ए रिटर्न स्पीड। So, sir, that will be 175. हाँ, जो भी आपका प्लस माइनस हो रहा है। And the Yeah. other outbound is 265. या And जो still टेल we विंड get, है उसको। क्या बोल रहे हो? still मुझे आंसर 694 मिल रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड। आउटबाउंड तो ले लिया, बट ये होम बाउंड क्या लिया है आपने नीचे? फॉर्मूला। 170, हाँ तो वापस सॉल्व करो। एंड्योरेंस क्या लिया है? 6 hours. हाँ तो वापस सॉल्व करो। 6 इंटू होम बाउंड अपॉन आउटबाउंड प्लस होम बाउंड। वापस सॉल्व करो, करेक्ट आंसर आएगा। गलत आ ही नहीं सकता। दोबारा सॉल्व करो ना। क्या रहा आंसर नंदिनी? Just a minute, sir. अभी शायद करेक्ट आएगा। तो तुमने वापस से क्यों लिए गलत स्पीच? मुझे वो तो बताओ। कंफ्यूजन कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ वो लूप होल मुझसे डिस्कस करोगे तो ही मैं सिखा पाऊंगा आप लोगों को। सर वो मैंने करेक्ट वैल्यूज डाली थी, बट फॉर सम रीजन आई गॉट द टाइम एंड आवर एज 3.97, बट अभी मुझे 2.38 आ रहा है। ह्यूमन एरर होगा। मितिका हुआ फिक्स कि नहीं हुआ, कि स्ट्रगल कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है सर। क्या समझ आ समझ गया। आया बता दो मुझे एक बार। सर वही सर मेरी गलती वो हेडविंड टेलविंड में हो रही थी, वो ठीक हो गई है सर, समझ आ गया। कैसे ठीक किया उसको बताओ। थोड़ा और प्रेजेंस ऑफ माइंड। हो गया ठीक कि होने वाला है? हो गया है ठीक। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर दूंगी तो हो जाएगा। करो करो ये वाला करो अब सब लोग। कोई इसका आंसर जोर से नहीं देगा। तुम अभी भी है ना दूसरी चीज के पीछे भाग रहे हो। ये कर लो, मैं बोल रहा हूँ रह जाएगा ना, करा रहा हूँ तो कर लो ना। ये करो सॉल्व फटाफट। इतना कितना भागना। कोई इसका आंसर आउटलाउड नहीं देगा। नंदिनी एंड मितिका, फोकस तुम्हारे ऊपर है। केयरफुली करो। आप जूम चैट पे आंसर नहीं दे पा रहे तो व्हाट्सएप पे दे दो। और ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया है ना, वो एक बार सॉल्व कर लेना। उसमें एक दो घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस दिए हैं। बट गुड थिंग इज क्वेश्चंस के पीछे उनका सोल्यूशन भी दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो स्किप मत करना यार, जो दिया है वो तो अच्छे से करना आप लोग। जो मैंने 2 PDF भेजी है ना, CP की एंड PNR की PSR की, उन दोनों में फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की सोल्यूशंस भी दिए है पीछे। आराम से स्टडी करना। याद समझ ना आए तो पार्किंग लॉट में डाल देना, कि अगर हमारा एक और सेशन होता है आप लोगों के साथ फॉर एग्जाम, वहां पे क्लैरिफाई कर सकते हैं लास्ट में एकदम। यहाँ देखो कितनी सिंपली आपको आउटबाउंड होमबाउंड दे दिया है। विंड कंपोनेंट डाला ही नहीं है। यहाँ तो मिस्टेक आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अश्विनी का आंसर सही लग रहा है मुझे। एक्सक्यूज मी सर। सर ये मिनट्स वेरी करता है, थोड़ा ज्यादा कभी कम। इसलिए बोल रहा हूँ ना, सिर्फ साइंटिफिक कैलसी पे करो। और वैल्यूज को अगर डेसिमल में है तो अप टू 2 या 3 डिजिट्स लिया करो, तो और एक्यूरेट आएगा आंसर। whatever your answer is, the closest option to your answer will be your answer, students. तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं है तुम, सच बताओ तुम ये कैलसी यूज नहीं कर रहे हो ना सॉल्व करने के लिए? नो सर। इसीलिए तुम्हारा नहीं आ रहा है।
तुम शायद डिजिटल वाला कर रहे हो, है ना? मोबाइल या गूगल वाला या मोबाइल वाला, हाँ वहां पे एरर आएगा ही। तो मैंने कितने दिन से बोला ये लेके बैठो, मंडे से बोल रहा हूँ मैं, बोला किसको नहीं है तो बोलो मैं भिजवा देता हूँ। अभी क्या एक्सक्यूज दोगे आप? तो ये भी नहीं बोल सकते सर पॉकेट मनी खत्म हो गई है, मैं पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेना नहीं चाहता, मैं तो बोला मैं भिजवा देता हूँ। एकेडमिक एंड स्पॉन्सर जो भी हमारे कैपेसिटी में हो, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट आप वो सब चीजें नहीं मानते हो ना अश्विनी, इसलिए गुस्सा आता है मेरे को तुम पे बस। एज अ टीचर बोल रहा हूँ। नितिका आंसर नहीं आया शायद तुम्हारा, अच्छा आ गया है, गुड जॉब। ठीक है, अभी प्रैक्टिस में बाकी कर लेना, उनके सॉल्यूशंस भी पीछे दिए है। पीएसआर पे एक और सम आता है फ्यूल फ्लो वाला, अभी तुम्हारे दिमाग में वो बर्डन नहीं डालूंगा मैं, ठीक है? बाकी लोग को करा दूंगा मैं। बाकी मितिका इसको अच्छे से कर लो, हम जो एक सेशन करेंगे जहाँ तुम्हारे टॉपिक्स रह गए हैं उसमें शायद मैं वो आपको फ्यूल फ्लो वाला भी करा दूंगा, बट तब तक ये मास्टर कर लेना आप। इसके आगे कुछ नहीं करो, पीएनआर का चल जाएगा। ठीक है, वो 4 क्वेश्चंस और है वो प्रैक्टिस कर लो एवरीवन फॉर पीएसआर। एंड उसके पहले है कुछ 20 क्वेश्चंस है टोटल सीपी के, अच्छे से कर लेना। उसके फर्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस भी दिए पीछे, पूरा पीडीएफ चेक कर लो, अच्छे से कर लो प्रैक्टिस। कोई डाउट? नेगेटिव सर। चलो ऑल द बेस्ट एंड आई सी यू सून स्टूडेंट्स। कल तो छुट्टी है, तो कल का दिन आराम से करना पढ़ाई, एंड कभी कुछ चाहिए मैसेज छोड़ के रखो। और अगर मेरे से बात नहीं हो रही तो गो ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, मैसेज तो छोड़ दो, मैं जरूर देखूंगा, देख के तुमसे टाइम कंसल्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, तो हम वो 1-on-1 कर लेंगे कॉल पे या कैसे भी। नंदिनी एंड चैतन्य एंड गुलशन एंड नुकुल, आप लोग भी सेम फोकस के साथ ही करो, एंड प्लीज डोंट फील कि मैं आज पार्शियल हो रहा हूँ ये लोग के टूवर्ड्स। अभी तुम्हारे साथ भी वैसे ही करेंगे हम जैसे ये लोग के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा गलत मत समझना, ठीक है? एंड आई सी यू व्हेन आई सी यू स्टूडेंट्स, प्लीज स्माइल एंड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं रहोगे ना तो 69 पे अटक सकते हो, और पॉजिटिव रहोगे तो 70 आ जाएगा ऑन अ बैड डे, बोल रहा हूँ मैं। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी जो मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे से चलती है, और मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में भी चलती है। एक मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं बिकॉज वो थोड़ा खुद का वो प्रचार करता रहता है यहाँ वहाँ, तो नाम नहीं लूंगा मैं उसका। बट ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कुछ चीजों में, खुद का ही दिमाग लगा के कुछ एक्स्ट्रा करके गलत आंसर आ जाते थे उसके। बट अच्छा स्टूडेंट था विद रिस्पेक्ट टू क्लास, बट उसका ये एरर था और कोई एरर नहीं था। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसको कितना आया स्टूडेंट्स? मैं उसको हमेशा बोलता हूँ बच्चे, कुछ लोगों को पता होगा अगर तुम लोग थे वो बैच में, तो तू रह जाएगा 69 पे, तू रह जाएगा 69 पे, तू ये मत कर मत कर मत कर। पता है उसको कितना आया? उसको आया एग्जैक्टली 70। एंड आज है ना वो एज अ प्रोफेशनल लोगों के सामने जाता है नेविगेशन, बिकॉज वो उसने मास्टर कर लिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर। आ रही बात समझ में? इट रियली वर्क, 70 आया उसको फर्स्ट, 70, इमेजिन। उसने ध्यान दिया उस चीज पे, हाँ सर जो आप बोल रहे हो वो मैं नहीं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। उसने किया ट्राई, वो एक पे तो किया ही होगा क्वेश्चन पे, या 3 पे किया होगा मुझे लग रहा है, कि मुझे पता था वो 67 to 69 के बीच में अटक सकता है। अब वो मुझे नहीं पता कैसे पता चल जाता है, जस्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स। बट वो हमेशा सही होता है, हमेशा सही होता है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ बस। समझ रहे हो? तो आप बस ध्यान रखो और जो बोल रहा हूँ उतना करो, आप आराम से पास हो जाओगे। वो बिलीफ रखनी बहुत जरूरी है लेकिन ना, ठीक है? वो बिलीफ नहीं रखोगे ना, पढ़ाऊंगा मैं ही दोबारा बट तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा दोबारा फिर। समझ रहे हो? फिर मैं लाल हो जाऊँ ना, पूरा एंग्री बर्ड हो रहा हूँ पूरा। चलो आई सी यू, गुड जॉब एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, आई सी यू व्हेन आई सी यू। Bye, sir. बाय, Thank you, थैंक यू। sir. मोस्ट Thank you, sir. वेलकम। Yes, sir.